evening, everyone. Am I audible, guys? Oh, good evening, everyone. So, have you guys tried to solve questions related to conditional statements? Have you guys tried? So, if anybody is facing any issue in any problem, you can just put your question in Q&A so that I can take that thing at the end of the session. So, those who are having issue in any of the problems related to conditional statements, please put your question in Q&A so that I can take your question at the end of the session. Okay. And why strength is too low today? Is it because of Navratri? Hmm? Why is strength is too low? 19 people are there. If any question, anything you guys want to ask, you can just put your question in Q&A so that I can take that thing at the end of the session. Okay. 19 people are there. Please inform your friends to join today's session, guys. We are going to start loops, and loops is something that you will use in actual programming. बहुत बार loops use हो. Okay, millions of times you are going to use looping concepts for loop while loop. 90% of the problems you are going to solve with the help of loops. Okay, and so that today we are going to start loops. So please inform your friends to join today's session. Please inform, because else it will be a burden after that. If they are skipping today's session, it will be a burden. Right? क्या clear है ये point? Everybody, please let me know if this point is clear. Okay, once more. देखो यहाँ पे क्या है. आपने कंडीशन दी, ठीक है. जब तक ये बाहर वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, आपकी इनर कंडीशन कभी नहीं चलेगी. अगर आपको इनर कंडीशन चलानी है, तो इट इज फॉर श्योर दैट आपकी बाहर वाली कंडीशन, जब आपकी बाहर वाली ट्रू होगी तभी आप अंदर जा सकते हो. जब आपकी बाहर वाली जो ट्रू होगी तभी आप अंदर जा सकते हो. अगर इसका एग्जांपल आपको सिंपल लेना है, यू कैन टेक वन एग्जांपल. सी, दिस इज अ रूम. एक रूम है. ओके, inside this inside this we are having one more. ठीक है. अब देखना, दिस इज योर आउटर रूम. ये मेरा आउटर रूम है, एंड दिस इज माय इनर inner. एंड फॉर गोइंग टू दिस इनर रूम, अगर आपको इस अंदर वाले रूम में जाना है, सो फॉर दैट देयर इज वन गेट विच इज प्रेजेंट हियर. एक गेट यहाँ पे, और आउटर रूम का गेट यहाँ पे. आपको ये बताएगा कि आप बिना आउटर रूम, अगर आपने ये रूम नहीं खोला है, आप डायरेक्टली क्या इनर रूम में कभी जा सकते हो? डायरेक्टली अंदर वाले रूम में जा सकते हो जब तक ये ओपन नहीं हो रहा है. कैन यू गो इन दैट केस? आंसर इज नो, आप नहीं जा सकते. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेट. तो सेम चीज मैंने यहाँ पे बताई. अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तभी आप नेस्टेड के अंदर जाओगे, तभी आपकी कंडीशंस चेक होगी अंदर वाली. अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, डायरेक्टली आप मूव कर जाओगे एल्स पॉइंट. फिर ये कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी. ठीक है, बस इतना ही मैंने बताया. दैट इज क्लियर हुआ?
डायरेक्टली कभी भी आप डायरेक्टली आपकी ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अगर ये ट्रू होगी तभी ये इसके अंदर जाएगा, अगर ये फॉल्स होती है तो डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा। ये बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक कोडिंग प्रॉब्लम लेते हैं, देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद दिस। सी, coding problem is determine whether a student is eligible for scholarship or not. Scholarship, मुझे बताना है कि whether a person is eligible for scholarship or not. ठीक है, ये चीज बता। आप समझना यहाँ पे what are the cases which are there. What are the cases which are there? That means what are the conditions which are there? The condition is if CGPA is greater than 8.5, जो CGPA है वो greater है 8.5 and जो extra curriculum activities, extra curriculum activity is greater than 3, इस केस में क्या होगा, फुल स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी उस स्टूडेंट। नेक्स्ट कंडीशन इज CGPA is greater than CGPA is greater than 8.5, CGPA जो है वो 8 पॉइंट से ग्रेटर है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं वो लेस है 3, okay, that are less than 3. So in that case partial scholarship will be given. In that case partial scholarship will be given. Next case is जो CGPA है, CGPA is greater or less than 8.5, CGPA जो है वो लेस है 8.5 से, और जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो हैं that are greater than 6, in this case also partial scholarship will be given. Next case is if CGPA is less than 8.5 and extra curriculum activities are less than 6, 6 से कम है, in that case no scholarship. अब कोई बताएगा when CGPA is 8.5, जब CGPA हमारा 8.5 से ज्यादा होगा then only we need to check extra curriculum activities or not. जब मेरा CGPA 8.5 से ज्यादा होगा तभी तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी चेक करूंगा, और डायरेक्टली आई विल चेक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। एनीबॉडी, क्या मैं डायरेक्टली एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी चेक करने लगूंगा? नो, फर्स्ट आई विल चेक CGPA. So this is my outer condition. If CGPA is greater than 8.5, then what I will check? Then मैं चेक करूंगा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये समझ आया कैसे यहाँ पे नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं? In this problem, how nested conditional statements have been used, is this point is clear or not? First, you need to check CGPA. So let me ask from the end user to give CGPA as an input. CGPA क्या format क्या रहेगा? Which data type? Which data type we need to pass for CGPA? Int. Float. Float is the CGPA. ठीक है, float रहता है. So after this, you need to take extra curriculum activity counts. So let me take some variable extra CURR curriculum. Okay, it is in the form of integer. So int input, enter number of extra curriculum activities that you have done. आप extra curriculum activities की details दो, that I am asking. Okay, from the end user. User will give some input. यहाँ पे क्या करेगा? User will give some input. After this, I will check condition. First is I need to work over CGPA.
इफ CGPA वैल्यू इज ग्रेटर देन 8.5, अगर ये ग्रेटर है 8.5, then what I will check? I will check extra curriculum activities. So extra curriculum. If extra curriculum is greater than 3, अगर extra curriculum greater than 3 है, in that case student will give congratulations, congratulations, you received, you received, you received full scholarship. आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी इस केस। बट सपोज दैट कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज सीजीपीए इज ग्रेटर बट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आर लेसर, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो है वो कम है। सो इन दैट केस प्रिंट कैंडिडेट विल रिसीव पार्शियल स्कॉलरशिप मिलेगी बच्चे। So these two condition has been finished. If CGPA is greater than 8.5, तो हम क्या कर रहे हैं? First we are checking extracurricular activities are greater than 3 or not. If it is greater than 3, then I am saying this thing that yeah, you receive full scholarship. But अगर कम है extracurricular activities, in that case, student will receive partial scholarship. Same as it is second case. Second case is your eligibility. Now, अगर CGPA greater नहीं है 8.5, that means CGPA less होगा, 100% CGPA less होगा, because we are not, this condition is not true. That means your CGPA is lesser than 8.5. So if it is lesser than 8.5, again we are going to check conditions. What is my condition? CGPA is less than 8.5, but extracurricular activity is greater than 6. तो ये 6 से greater होनी चाहिए. So in this case, candidate will receive partial scholarship. बच्चे को partial scholarship. Else, what you will get? Sorry, candidate will receive no scholarship. That's it, guys. Okay. अब इस कोड में कहां पे जिसको डाउट है प्लीज लेट, in this code if any doubt is there please let me. Others जिसको भी डाउट है please let me know so that I can explain. Simply what we are doing, see the condition. If CGPA is 8.5, then we need to check extracurricular activities. तब मैं extracurricular activities check करूं. If CGPA is less than greater than 8.5 and extracurricular activity is less than 3, तो उस केस में क्या होगा? Partial scholarship. Others guys, those who are from non-IT background, is this question is clear or not? Okay. Fine. Now एक चीज पूछूं मैं, can I use elif here? क्या elif use कर सकते हैं? Instead of else, can I use elif here and then we can put condition, whatever condition has been given. क्या मैं elif use कर सकता था यहाँ? Anybody? Yes, we can use elif here. क्यों कर सकते थे आप समझना, क्योंकि 8.5 देखो दो कंडीशन यहाँ पे इन्होंने दी है, 8.5 से बड़ा हो या 8.5 से छोटा, तो चाहे तो आप एल्स कंडीशन ले लो डायरेक्ट, चाहे आप एलिफ लगा, दैट इज आल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. सो एलिफ में इसको कैसे करते हैं, हाउ वी कैन डू इट इन एलिफ? सी, if now here instead of this else I will take condition extracurriculum activities is greater is जो कंडीशन यहाँ पे दी लेस देन that's ये elif का केस बना. Same as it is here also, if you want to take elif, you can take elif. CGPA is less than, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंडीशन थी तो एल से भी काम चल जाता. अगर मल्टीपल कंडीशंस होती तो एल से काम नहीं चलता, बट यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन, 8.5 से बड़ा, 8.5 से छोटा. ओके, सेम एज इट इज हियर आल्सो वी कैन टेक elif extra underscore कर
इज स्मॉलर दैन, दोनों का आंसर सेम आएगा. लेट मी शो. Suppose that 8.9 I am giving and curriculum activity is 4. Congratulations, you receive 4 scholarship. Same as it is here also. Okay. See, 8.9 and 4. Same. तो यहाँ पे दो कंडीशन थी, इस वजह से मैं एलिफ भी यूज कर सकता था, एल्स भी यूज कर सकता. इट्स अप टू यू विच थिंग यू वांट टू. यू कैन आइदर यूज एल्स, यू कैन आइदर यूज एलिफ, क्योंकि दो कंडीशन. अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, in that case explicitly you need to use elif only, तब हम elif का ही यूज करें. that is your mistake. we can use aryan, ये भी कर सकते हैं. okay, we can also use and or, but right now वो चीज मैं नेस्टेड पढ़ा रहा था ना, इस वजह से मैंने एग्जांपल लिया. इस एग्जांपल को आप and से भी कर सकते. करेक्ट, we can do that. मैं नेस्टेड पढ़ा रहा था, so I have taken this example. हाँ guys, is this example is clear? क्या ये क्लियर हुआ? नितेश, is it clear? Can you explain by applying this to any question? भाई ये क्वेश्चन नहीं था क्या? Is it not a question? We are applying this in question itself, na? This is your question only. Two conditions are there. CGPA is greater. See here, CGPA. These two conditions are CGPA is greater than 8.5, and these two are CGPA is less than 8.5. Only two conditions are available. That's why I have taken if. You can either take if else. You can either take if and. Both are same. कोई अंतर नहीं. Nitish, which question applying you are asking? Because this is a question that we are discussing. A question here. Or which type of question you want? Hmm. Just tell me which type of question you want so that I can apply that. Nitish, please let me know like किस type का question चाह रहा है so that I can take that question. These are the examples of nested if else. Example ही है nested if else. In this way only we are going to use nested if else. Okay, let's take one more problem. जिसको clear नहीं हुआ, let me take. Implement a simple calculator. Implement a simple calculator using nested conditional string. ठीक है, क्या मतलब है इसका? What is the meaning of this? Try to understand. I will ask from the end user. I will ask from the end user. Tell me your choice. आप क्या कराना चाहते? You want addition? You want subtraction? Which thing you want? Okay. So I will ask from the end user. कि आप चाहते क्या? Which thing you want? So that thing I am giving here. So choice is equal to, from the end user I am asking, tell me your choice. Enter your choice. आप अपनी choice बताओ, which thing you want to do. Which thing you want to do. जो भी आप करना चाहते हो, आप उसका वो मतलब एडिशन करना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, you will do. After this, I will ask from the end user to give inputs. That means addition, subtraction, whatever numbers you want to take, that I am going to ask from the enter first number and enter second number. ठीक है. So two things I am asking. Choice is nothing but which mathematical operation user wants to do. कौन सा mathematical operation user चाहता है? Okay, that I am asking. Okay, simply that I am asking. After this, what is my next step? Next step is condition. If choice is equal to, आप symbol दे सकते हो. Let me take symbols. If choice is equal to plus. In this case, what I need to do? I need to take summation of num1 plus num. ठीक है. Second case, and if choice is equal to minus.
That means I want num1 minus elif choice is equal to something like star. That means multiplication. अगर multiplication चाहिए, you will pass star. So result is equal to multiplication. That means num1 into num. Now same as it is, I want division as well. So elif choice is equal to division. Okay, that is your result is equal to num1 divided by. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख, अगर यूजर ने इनमें से कोई भी इनपुट नहीं दिया, इफ यूजर हैज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ इनपुट, then what I will give, I will give please enter correct operation. आपने गलत ऑपरेशन दिया है, प्लीज गिव योर करेक्ट ऑपरेशन. अब इस केस में नेस्टेड का यूज होगा. आई विल शो. आफ्टर दिस आई विल प्रिंट माय रिजल्ट. मैं रिजल्ट प्रिंट कर. See, I am going to run this. I am taking plus. When I am taking plus, it is asking for what is my first number, what is my second number. 98, 34. So this is my addition which we are giving. So if you want, you can take result equal to like this. You can take like this. So same as it is if I am taking divide. Okay. And I am passing 12 and 4. See, result is your 3. क्या ये कोड सही है guys? Anybody? Just think. Is this code is correct? Is this code is correct? Anybody? क्या ये कोड करेक्ट है? Anybody? Is this code is correct? Anybody? Please tell me. सोचो, क्या ये कोड करेक्ट है या कहीं पे ये फेल हो जाए? कहीं पे ये फेल हो जाए. I know this thing somewhere it will get failed. Where it is failed, anybody just take a guess. कोई लोग guess करो कहाँ पे ये फेल होगा, और वहां पे हमको nested लगाना पड़ेगा. We need to use nested in that. See where it is failing. Let me clear that. If colon तो मैंने यूज किया है, हर जगह कहाँ नहीं यूज किया. This is also colon. 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 We have used colon. Okay. So it will fail. It will fail if my num2 value is 0. अगर num2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप डिवाइड ऑपरेशन नहीं कर सकते. लेट मी शो यू. 10 डिवाइड बाई 0 आ गया नहीं आ गया यार? Why it is there? Because if the denominator, okay, जो भी आपका denominator है, if denominator is 0, can we perform division? अगर denominator 0 होता है, क्या हम division कर सकते हैं? Mathematics simple question. If denominator is 0, can we perform division at that point? क्या 0 से किसी को divide कर सकते हो आप? We can't divide. You will get infinite as a result or undefined as a result. Okay. So now, how to handle this scenario? अब ये handle कैसे हो? So what I will do is, when this condition is true, जब ये true हो, then what I will check? I will check if num1 is equal, num2 is equal to 0. अगर num2 की वैल्यू 0 है, अगर num2 की वैल्यू 0 है, in that case you cannot perform division. आप क्या लिखोगे? You will write something like denominator is 0, so we can't perform division of. आप division operation नहीं कर सकते. We can't perform division. Now suppose that अगर num2 की कोई और वैल्यू, अगर num2 की कोई और वैल्यू, in that case I will take else. मैं लूंगा else. That's. क्या कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है? Oh, this quotation. Yeah, I will take else. So here you will see I have taken nested condition. Why nested condition? अगर यूजर ने डिवीजन पे क्लिक किया है, अगर यूजर ने डिवीजन पे दिया है, तो मैं चेक करूंगा num2 जो है वो 0 है कि नहीं. अगर वो 0 होता है, आप डिवीजन नहीं कर सकते. So that thing I need to mention. Let me show you. /10 0. देखो एरर आई क्या?
वी कांट गेट एनी काइंड ऑफ एरर, एरर नहीं है। ओके, सो दैट इज अ। और अगर आप इसमें प्रिंट करने की बजाय आप एक काम करो, आप इसको रिजल्ट के अंदर स्टोर, बिकॉज दैट इज योर रिजल्ट इन दैट, उस केस में रिजल्ट आपका ये रहे। सो यू कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। नाउ सी 10 divided by 0, result is denominator is 0, so we can't perform division operation. So what we have done here, this is nothing but nested conditional statement. One condition has been given, inside this one more condition I have given, can give, that is one more example. Is it clear? क्या clear हुआ second example of? This is the meaning of nested. Nested का मतलब है condition के अंदर condition है, that is your nested state. नितेश, अब आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? इन दिस वे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमको लिस्टेड यूज करना है कि नहीं करना। बिकॉज हियर इज द रिक्वायरमेंट दैट इफ स्लैश वी आर यूजिंग, देन डेनोमिनेटर विल, और डेनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। आपका डेनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। सो आई हैव जस्ट टेक दैट कंडीशन। ठीक है, फाइन। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट वन, सो दीज आर योर कंडीशनल स्टेटमेंट दैट वी हैव. So after this, anybody, what is my next type of statement which is there? Next type of statement कौन सा है इसके बाद? स्विच केस हमारा पाइथन के अंदर नहीं होता है। ओके, इन पाइथन वी डोंट हैव स्विच केस कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ, व्हाट इज माय नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट? यस, मैच केसेस देयर। ओके, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके ये थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप का स्टेटमेंट क्या है? आइटरेटिव स्टेट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नेस्टेड इफ एल्स, तो अभी समझाया है मैंने। Okay, so next type of statements which is there is iterative state. So next we are going to discuss iterative statement. But before moving to iterative statement, you need to understand one function that is known as the range function. ठीक है, एक function होता है that is known as range function, that you need to understand so that you will be comfortable with for loop and while. तो एक function होता है range function, that is important and you need to know how range function is. What is this function basically? This function is used, this function is used to generate, this function is used to generate a sequence of numbers, a sequence of numbers. आपके पास एक sequence दिया हुआ, sorry, you are having one number और आपको एक sequence generate करना है starting from 0. You are going to use range function. Okay, you are going to use range function in that. So आपको अगर नंबर जनरेट करना, नंबर्स जनरेट करने, in that case you are going to use range function. One more important point here is range function will return range object, range object. और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, we cannot use that object direct. आप उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। You need to typecast that in the form of either list or tuple or set or dictionary or with the help of for loop. A for loop use कर सकते। So it will return a range object. So if it is returning a range object, so if we want to see the generated numbers, so if we want to see the generated numbers, जो भी number generate हो, if we want to see the generated numbers, then either we need to typecast that, either we need to typecast the result, or else use loops. तब आप कर सकते, ठीक है। What is the syntax of range function? क्या syntax होता है? So range function, you can simply write range and inside this you can give your start. कहां से आपको नंबर जनरेट, then you will give your end, कहां तक नंबर जनरेट, and then
स्टेप वैल्यू आपकी सेम है जो मैंने बताया था आपको स्लाइसिंग. So now your start is an option. Start is an option. So अगर आप start नहीं देते हो, in that case by default start value is, so this one is your optional, and by default start value is 0. By default start value रहेगी वो 0. Now what about end? Remember this, end is mandatory. अगर आप एक आर्गुमेंट भी देते हो, if we are giving a single argument in range, then that argument will be considered as end value. और एक चीज और है, जो end होता है, end will go till end -1. अगर आपने 10 दिया है, then it will start from 0 and it will go till 9. So and जो भी नंबर आप दोगे उससे एक कम तक जनरेट करेगा. If you have given range of 10, so till 9 it will jump. Next is your step. Step means gap value or skip value. कितनी वैल्यू आपको स्किप करना. Okay, how many value you want to skip? That is your gap value. Let me show you one more thing. If step value is 1, how many elements we are going to skip? कितने एलिमेंट स्किप करते थे जब स्किप वैल्यू स्टेप वैल्यू 1 होती थी? Anybody? 0. Correct. 0 is my element that I need to skip. Same as it is if step is 2. In that case, we need to skip 1. Same as it is step value is 3. In this case, I need to skip and so. Okay. अगर step मेरा n है, so how many elements I need to skip? n minus that. तो इतनी चीजें आपको याद है. Okay. There are some variations of range function as. कुछ variations भी हैं. What is that? Suppose that generate numbers from 0 to 9. ठीक है. अब ये कैसे समझ. range. Now this is your first range of 10. In this case, see, you have given only one argument which is 10. आपने एक argument दिया है जो कि है 10. In that case, and one more thing, it is also optional, guys. It is also optional. By default, value is. Now see, here if you have given only one argument, so that argument will be considered as ending argument. तो आपका starting और step क्या रहेगा in that case? So in that case, starting will be 0, ending is your 10, and step value is. आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो. ये चीज जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो. Other than this, you can also write the same thing like 0, 10. आप step ना. If you have not given step, in that case, 1 is my by default step which will be considered. So अगर आपको नंबर जनरेट कर रहे हैं 0 से 9, in that case you can either give this, or you can either give. All three will generate numbers from 0 to 9. ये तीनों चीजें आपकी नंबर जनरेट करेंगी from 0 to 9. Let me take one more example. Generate numbers from 0 नहीं ले रहा हूं, from 20 to 100. मुझे 20 से 100 तक नंबर जनरेट करना. So in this case, your starting is 20, ending is 100. Shall I write 100 here? क्या 100 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा? Anybody?
We will write 101 because end is exclusive. आपका end जो होता है वो consider नहीं होता है. So if you have written 100, then it will go till 99. You need to write 101. Okay, and this same thing you can write like this. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. Range of 20 comma 101 comma 1, क्योंकि step तो आपका by default है. Your step value is by default. So if you are not giving step value, by default 1 will be considered in that. क्या इसको मैं इस सीक्वेंस में लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? Range of 20. Can I write like this? Just think. क्या ऐसे लिख सकता हूं? Range of 20. I want to, sorry, range of 100. Can I write like this? Anybody? We can't write like this because in this scenario you have given end. अगर आपने end सिर्फ दिया तो आपका start कहाँ है? 0. तो ये क्या करेगा? 0 से 100 तक नंबर जनरेट करके दे देगा. It will generate numbers from 0 to 100. That is the thing. अब इस थ्योरी में किसी को डाउट है तो पूछ लो, else I will move with practical examples. In this theory, if any doubt is there, please let me. What range is giving? Simply number generate. आपको नंबर जनरेट करके देगा 1 to 100, 2 to 50, जितने भी नंबर आपको जनरेट करने आप कर सकते. Okay, now next scenario is, next take some examples of that. I am writing x is equal to, let me take questions. Generate numbers from 0 to 9. First example is, now here I am writing 10. अगर मैं सिर्फ ऐसे 10 लिख देता, and if I am going to print x, shall we get numbers from 0 to 9? क्या x के अंदर 0 to 9 मिल जाएगा? Anybody? x के अंदर क्या हमको 0 to 9 numbers मिल जाएंगे? The answer is no. There is a reason. See here, I told you. Range function will return a range object. आपको numbers नहीं दिखेंगे, वो एक ऑब्जेक्ट दिख जाएगा range 3, 10. That's it. Let me show. आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिख जाएगा. अगर आपको नंबर देख रहे हैं, if you want to see numbers, so in that case you need to either convert it in the form of list or typecast it in the form of list, or you can use names. So मैं यहाँ पे typecast करके आपको दिखा देता हूँ. What I will do is I will convert this in the form of list, or you can also convert it in the form of tuple. You can also convert it in the form of set. It is accepted. See, these are the numbers which are generated. सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे 0 to 10. इट इज ऑल्सो जनरेटिंग सेम नंबर. और सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे 0, 10, it is also generating numbers from 10. Now suppose that I want to generate numbers from 20 to 100. मुझे 20 से लेके 100 तक नंबर जनरेट करने. So you will write 20. Your starting will be 20. Ending is what? Ending is 101. और स्टेप आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना है तो बाय डिफॉल्ट 1 रहता ही रहता. See, your numbers are generated from 20 to 100. अब बात आती है स्टेप वैल्यू. What is the meaning of step? Suppose that one question is there. Generate all numbers from 20 to 100. 20 to 100 के बीच में सारे नंबर जनरेट करने हैं. All the numbers I want to generate after skipping every 2 elements. 2 एलिमेंट को स्किप करते करते सारे एलिमेंट्स हमको करने. अब यहाँ पे कैसे हो? In this scenario, I will take step value as, क्या लेंगे? 3 or 2? We will take 3. Okay, see. Your numbers are generated and how many elements are skipped? 2 elements are skipped. So if you want to skip the elements 20, after 20, 2 elements is skipped. So 21 and 22 has been skipped. 23 is my next element. Same as it is 23. After 23, next element will be like that. You will. अब यहाँ पे एक और चीज आती है. सपोज दैट किसी ने आपसे पूछा जनरेट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100. आपको सारे इवन नंबर निकालने हैं फ्रॉम 0 to 100. Okay, so how we will generate even number? So generate even number means 0, 2, 4,
6,8 ऐसे ये इवन नंबर्स। अब कोई बताएगा फ्रॉम वेयर आई एम स्टार्टिंग, फ्रॉम वेयर आई नीड टू स्टार्ट, फ्रॉम जीरो आई नीड टू स्टार्ट, आई नीड टू गो टिल 100, 100 मींस 100। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट हमको स्किप करने हैं, कोई बताएगा? हाउ मेनी एलिमेंट्स आई नीड टू स्किप फॉर गेटिंग इवन नंबर्स? For getting even numbers, how many elements I need to skip? One element we need to skip, and one means two we need to pass in my step. See, all the even numbers are generated between 0 to, किसी ने आपसे पूछा generate all numbers, generate all numbers, or you can say generate all numbers between 50 to 100, 50 to 100, or you can say between 3 to 150, which are divisible by, तो मुझे 3 और 150 के बीच में सारे नंबर जनरेट करने हैं that are divisible by। अब समझना, 3, 6, 9, 12 and 15 and so on। Starting is your 3, so आपने 3 दे, ending is your 151। अब आ जाओ स्टेप, how many elements we are skipping here? कितने एलिमेंट स्किप हो रहे हैं? 2 elements we are skipping। So what is my step value? 2 plus 1, that is your 3। That's it, आपकी 3 की टेबल है। So that is the power of range function। अगर आपको नंबर जनरेट करने हैं, you can easily generate numbers with the help of range function। So range function को आपको typecast करना पड़ेगा, because if you are not typecasting it, you will not able to see the content or the numbers which are generated with this function। जो numbers इससे generate होंगे, you will not able to see that। आप पूछो रंजीत, yes it is possible, it is possible। रेंज फंक्शन ओनली इंटीजर नंबर्स, रेंज सिर्फ इंटीजर नंबर को जनरेट करता है। इट विल नेवर जनरेट फ्लोट नंबर्स, इट विल नेवर जनरेट फ्लोट नंबर्स, ठीक है? इट विल ऑलवेज जनरेट इंटीजर नंबर ओनली। सिर्फ इंटीजर जनरेट होते हैं, फ्लोट नहीं जनरेट होते हैं। आप देखो सारे इंटीजर हैं, अगर आप फ्लोट दे भी दोगे पाइथन एरर दे देगा तुरंत, बिकॉज इन द डेफिनेशन इफ यू विल सी generate a sequence of number or generate a sequence of integer numbers, सिर्फ इंटीजर जनरेट होंगे, फ्लोट कभी जनरेट नहीं करता है रेंज। ओके, someone is asking how to generate negative numbers। नेगेटिव नंबर कैसे जनरेट, समझना। suppose that I want to generate numbers, suppose that I want to generate number from -10 to 1 or -1 to -1, -1 to -5, just a moment। हाँ, देख, generate numbers from -10 to -1, -10 से -1 तक नंबर जनरेट करने। हाउ वी विल डू, -1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम -10, -10 से स्टार्ट होना है, जाना कहां तक है? -1। तो -1 की जगह -2 मैं ले रहा हूं यहाँ पे, -2। सो -2 मैंने यहाँ पे लिखा है। आफ्टर दिस योर स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रहती है, तो मैं उसको चेंज नहीं करता। योर नंबर्स आर जनरेटेड, नेगेटिव नंबर्स आर जनरेटेड। आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं। सपोज दैट इफ यू आर टेकिंग समथिंग लाइक 100, आपसे -10 से लेके 100 तक सारे नंबर जनरेट हो जाए। If you are taking -100 to 100, that is also possible। See, -100 to 100 is also possible, you can generate। Okay, so in this way you can generate, just give your starting and then give your end from where you want to generate and up till when you want to generate, just pass that। Okay, clear Ranjit? Negative number भी generate होते हैं। Can we take tuple? Yes, we can take tuple, we can take set, anything you can take, it's up to you। मैंने बताया टाइप कास्ट आप किसी में भी कर लो, आप टपल में करना चाहते हो आप टपल में कर लो, आपको सेट में करना है आप सेट में कर लो, बट डिक्शनरी में मत कर लो, एरर आ जाएगी, बिकॉज डिक्शनरी इज द सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, सी इन सेट ऑल्सो यू कैन।
Ask doubts in range function guys, जल्दी जल्दी बताओ रेंज फंक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब. इट इज सिंपली यूज टू जनरेट नंबर्स, बस इतना इसका लॉजिक है कि नंबर जनरेट करके दे और कुछ नहीं. Fine. So after this, so why I have discussed this range function? There is a very simple reason to discuss this range function. Because when I am explaining about iterative statements, आपका range function बहुत use होता है iterative statements. In iterative, that means when you are going to use loops, especially in for loops, most of the problems you will solve with the help of this range. Okay, बहुत सारी problem आप range से solve करते. Okay. Next type of statement is known as iterative statements. Iterative statements. What is iterative statement? See, conditional statements जो थे, that are used for giving some condition in your. If you want to give any kind of condition in your, if you are giving any type of anti, I will discuss that at last. डायरेक्शन आपकी बदल जाएगी. अगर आप स्टेप वैल्यू नेगेटिव दे दोगे ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी. स्लाइसिंग वाला लॉजिक यूज होगा उस केस में. अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन दे दोगे, दैट इज माइनस. ओके, मैं डिस्कस करूंगा एट लास्ट. ओके, iterative statement. What is iterative statements? So one statement is there, you want to execute that statement multiple times. अगर आपको multiple time किसी चीज को execute करना है, you are having conditional, you are having iterative statements for. So repetition के लिए यूज होता है हमारे ये statements. Repetition के लिए, अगर आपको कोड को repeat करना है, any number of times you want to repeat, you will use this iterative statement. So when we are going to use iterative statement, let me write here as well. If we want to execute a group of statements, multiple times आप कोई भी statement को execute करना चाहे, then we will use iterative. तब हम लोग iterative statements का use करते हैं, and that is also known as. So in our Python program, only two types of loops are available. Only two types of loops are available. First is known as for loop and second is known as while. So दो टाइप के लूप अवेलेबल होते हैं पाइथन के अंदर, फॉर लूप एंड while. ठीक है, फॉर लूप एंड while लूप, सिर्फ दो टाइप के होते हैं लूप्स. अब ये रिपीटेशन स्टेटमेंट्स की जरूरत क्या होती है? दिस इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेशन स्टेटमेंट्स. What is the need of this? इसकी नीड क्या है, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं? Let me show you one example of that, then you will be more comfortable. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. Suppose that, let me take one scenario. Requirements of iterative statements or loops. क्या इसकी requirement है that I am going to. So first point is, suppose that we want to print hello world. आपको hello world print करना है 1000 times. You want to print simply hello world 1000 times. आपको hello world जो है 1000 times जो है वो print करना है. That is our requirement. Okay. Now if you want to solve this with manual approach, so your first approach is approach one is we will write hello world 1000 times manually. पहला तो ये approach. What is that approach? You will write something like print hello world. Okay. और इसको आप print करते जाओगे up till you will print it like this up till, मैं इतना एग्जांपल ले रहा हूं, like this you will write it 1000 times. एक तो ये भी. Second way is what? That is your approach. Your approach to is write once. Write hello world. एक बार आप hello world लिखो and repeat that hello world
1000। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, then which approach you are going to follow? Approach one or approach one or approach two? Which approach you will follow? Definitely approach two you will. क्यों approach two आप follow करोगे? Because only one time I am writing. What is my approach two? That is your iterative state. See, for I in range, मुझे 1000 time run करना है. So just write 1000 and then you can write print है. That's मैं 1000 टाइम नहीं ले रहा हूँ, मेरा सिस्टम हैंग कर, वो हैंग नहीं करेगा. A lot of hello words will come. I am taking 10. See, hello world is printing 1000. So which approach is feasible? As a developer, which approach is feasible? Definitely approach two is feasible. So wherever repetition is there, जहां भी repetition की requirement हो, कोई भी कोड है उसको repeat करना है, you will go with this for. Okay. So that is the requirement of for. यही actual requirement है हमारी for लो. अब इसमें डाउट पूछो. Requirement of iterative statement is clear or not? What is the requirement? Okay. Okay. Now let's start with first type of loop, that is for loop. एक type का loop है that is known as for. What is that for loop? Let me make a loop. Okay. First type of loop, number of word दोनों हो सकते हैं क्या loop? हाँ, कुछ भी ले सकते हो loop में, आप बता दो. जिसको भी आपको रिपीट करना है, आपको नंबर को रिपीट करना है, आप नंबर को ले लो. जिसको भी आप रिपीट करना चाहते हो, आप उसको ले सकते हो लूप के अंदर. इट डिपेंड्स ऑन यू. चाहे आप नंबर को पास करो, चाहे आप वर्ड को पास करो, आप कुछ भी पास कर सकते हो. ये आपकी मर्जी, आप क्या पास करना चाहते हो. We can pass number as well, we can pass text as well, anything you can pass. Now, first type of loop is known as for. So before understanding for loop, first tell me what are the iterables which are. Iterables हमारे कौन? Sir, speed please slow. यार हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं guys. You will see today's agenda is add custom functions, and even we have not completed for loop and while. Okay, still I am going very slow. Okay. So please try to grab the things because see, your I think 5 to 6 sessions are remaining. So within that, I want to give n number of things to. मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूँ. So please try to collaborate with me, okay, and try to understand the things. कोशिश करो समझ में आएंगी. ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत कठिन चीज, बहुत आसान चीज है. अब एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से बेनिफिट नहीं होगा. अभी जैसे मैंने बताया रिक्वायरमेंट, इसमें कुछ नहीं है. इसमें मैंने क्या बताया, इसमें यही बताया मैंने कि हेलो वर्ड आपको अगर प्रिंट करना है, आप क्या कर सकते हो, हेलो वर्ड को 1000 टाइम रन कर दो. पहला तो ये है. दूसरा क्या है, आप एक बार लिखो उसको रिपीट कर दो इतनी. ठीक है, आप ये कर सकते हो. तो सेकंड अप्रोच इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि एक बार मैंने लिखा उसी को रिपीट कर दिया है. तो बस यही मैंने बताया, इसमें क्या स्लूप है. ठीक है. सो दैट इज इट. Now let's start with iterables. What is iterables? So your iterables are your list, your tuple, your set, your dictionary, and range function is also an iterable. आपका range भी iterable. Okay. Range is also an iterable. आपका range function जो होता है that is also an iterable. So these all are your iterables. List, tuple, set, dictionary, and string is remaining, guys. String we have. ठीक है. String is also an iterable. So ये सारे आपके iterables consider. Now when I am talking about for if we want to execute or if we want to execute a group of statements, if we want to execute a group of statements,
ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, अगर मुझे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना इन एनी आइटरेबल, in any iterable, then we will use for loops. अगर आपको लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, रेंज या स्ट्रिंग पे काम करना, अगर आपको इन चीजों पे काम करना, then you will go with for. So for loop will work, for loop for loop will work only with iterables. सिर्फ iterables के साथ for loop वर्क करते हैं पाइथन की। only with for loop it will only with for. So if you want to iterate or if you want to go over these iterables, you will go with a for loop के साथ जाओ. So when you are going with for loop, if you want to work either list or tuple or set or dictionary or range or string, अगर आपको कोई भी चीज पे काम करना, you will go with for. Now, other than this, suppose that I want to work over numbers. So there is a possibility that you can use while loop in that case. So for loop basically work hota hai inke साथ. If you want to work over list, you can use. If you want to work over tuple, you can use for loop. If you want to work over set, you can use. If you want to work over dictionary, you can use. If you want to work over range map functions, you can use. A string is there, with a string also you can work. So Python for loop is only applicable with these attributes. With these attributes. So let me show you the syntax, then I will give you clear idea about this. Syntax में पहले बता दूं. For I in iterable, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. Here you need to give iterable only. अगर आप iterable नहीं दोगे, it will give an error. Directly you will get an error. Okay. After this, you can write your statements. You can write your statements. Whatever statement you want to repeat, that statement you can write. अब ये जो iterable वाला point है, let me show you with program. For I in 10. For I in 10. My questions. 10 is an iterable. क्या 10 जो है वो iterable है? Is 10 is your iterable? Is 10 is your iterable? No, 10 is not an iterable. So in this scenario, what result we will get? See, I am writing height. See, directly error will come. क्यों error आया? If you will see the error, I am also telling you why this error is coming. This error is coming because int object is not iterable. For loop जो होता है ना, वो सिर्फ iterables पे work करता है. For loop will only work with iterables. If anything is not iterable, आप use नहीं कर सकते for. So for loop is applicable only for these things. याद रखना इस चीज को. So if you are having integer, if you are having float, if you are having boolean data type, you can't use. You can't use for. आप for loop वहां पे यूज नहीं कर सकते. यहां तक किसी को डाउट है तो when you are going to use for loop, that I have to. For loop आप तब यूज करोगे तब iterables पे आपको काम करना होगा. That means if you want to work over list, if you want to work over tuple, if you want to work over string, you will use this. क्लियर है सबको? ओके, फाइन. What I said is iterables. Iterables means the data types which are storing more than one values. तो for loop जो होता है वो सिर्फ iterables पे वर्क. अगर आपने integer दे दिया, directly you will get an error. So that thing I have shown you here. 10 is your integer data type. It is not a part of iterable. So if it is not a part of iterable, you will get an error. तभी ये error है. So that thing I have shown you that for loop will work only with iterables. So if you want to work over iterables means these all are your iterables. So if you want to work over iterables, you will go with for. जितना बताया मैंने.
क्या क्लियर हुआ तथागत आपको? ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल लूंगा मैं? आई एम टेकिंग वन स्ट्रिंग, दैट इज स्ट्रिंग वन। हियर आई एम पासिंग हाय, हाउ आर। अब ये आई क्या हो? हियर यू विल सी दिस आई इज, this I is known as iterator. This I is known as iterator. तो जब आप फॉर लूप के ऊपर चलते हो, दैट मीन जब आप फॉर लूप चलाते हो किसी स्ट्रिंग के ऊपर, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर लूप ओवर अ स्ट्रिंग, देन कैसे फॉर लूप वर्क करता है? सो फर्स्ट केस में फॉर लूप क्या करता है, एक एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और एलिमेंट बाय एलिमेंट विजिट करता रहता है। तो वो एलिमेंट ही हमारा आई बोला। व्हाट इज दैट? लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सेम कोड का मैं एग्जांपल लूंगा, try to understand that. So suppose that instead of this, let me take one string, shorter string I am taking, which is Python. अब समझना सब लोग guys, what is the meaning of I? I is known as iterate. I क्या होता है? Iterator होता है. So if I am writing for I in string one, अब यहाँ पे होगा क्या समझ? And here I am printing I value. तो फर्स्ट केस में I की वैल्यू क्या हो? समझना, आई क्या होता है? जिसके ऊपर आप आइट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के ऊपर आइट्रेट कर रहा हूं, तो स्ट्रिंग इज व्हाट? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो आई की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट केस? सो फॉर द फर्स्ट केस लेट मी टेक हियर 5। फॉर द फर्स्ट केस, कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर हमारा आई वैल्यू होगा, दैट इज फॉर द फर्स्ट केस, फर्स्ट कैरेक्टर इज माई आई वैल्यू। देन नेक्स्ट केस, व्हाट इज माय आई वैल्यू? आई वैल्यू हमारा अगला कैरेक्टर होगा, दैट इज, क्योंकि हम फॉर लूप के हर एलिमेंट को विजिट कर, वी आर गोइंग टू गो इन लाइक विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, वी आर गोइंग टू विजिट ईच एंड एवरी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को विजिट करो, दैट इज योर आई वैल्यू, दैट इज आइट्रेटर। सो आई, देन आई विल बी व्हाट? आई विल बी टी, देन आई विल बी, then I will be something like T is completed O, then I value will be O, then I value will be something like. So what is I here? I is nothing but जितना for loop रन करता रहेगा, हर for loop में I की वैल्यू वही होती है जो उसके एलिमेंट को जितने कैरेक्टर्स को विजिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज रनिंग फॉर, वी आर गोइंग टू रन इन दिस फॉर लूप, सो आवर फॉर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम P। पहले ये इसको देखें, so your I value will be, then it will, when second time this for loop is running, it will check second time, that is 1, then third time T, fourth time H, five time O, sixth time N। so यही हमारा I is nothing known as iterator। Iterator means which iterates over an iterable, जो आइट्रेट करता है। आइट्रेट का मतलब होता है ट्रेवर्सल करना, ट्रेवर्सल का मतलब होता है विजिट करना, एक एक करके विजिट कर रहे हैं एलिमेंट्स। सो हियर फॉर आई इन स्ट्रिंग वन, वी आर अप्लाइंग फॉर लूप ओवर दिस स्ट्रिंग, मैं फॉर लूप इस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। सो इन दिस आई वैल्यू इज नथिंग बट योर कैरेक्टर्स, फर्स्ट कैरेक्टर इज योर, second character is your y, so P, first time I value is P, next time I value is y, third time I value is T, fourth time I value is H, fifth time I value is 0, sixth time I value is N। same as it is अगर मैं list लेता हूं, if I am taking list 1 is equal to something like 1 2 3 4 5, ठीक है? अगर मैं लिस्ट पे फॉर लूप अप्लाई करता हूं, if I am writing for I in list 1 and then I am writing print तो फर्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या होती? आई क्या करता? इस
आइट्रेबल के ऊपर आइट्रेट करता है। आइट्रेट का मतलब होता है विजिट करना। पहला एलिमेंट क्या आएगा, पहले बार में आई की वैल्यू क्या हो, एनीबॉडी, व्हाट इज माय आई वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इफ आई एम गोइंग टू आइट्रेट ओवर दिस लिस्ट। तो लिस्ट का पहला एलिमेंट जो होगा वही हमारा आई वैल्यू होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। So that is same as this. Next time when this for loop will run, so I value will be next time with then for loop will run. I value will be same as it is for, same as it is with. तो यही हमारा होता है आइट्रेटर। आइट्रेटर क्या होता है, जो भी आइट्रेबल आप यूज कर रहे हो, आइट्रेबल इज नथिंग बट अ सीक्वेंस, ओके, दैट इज गोइंग टू होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। व्हाटएवर आइट्रेबल यू आर गोइंग टू यूज, जो भी आइट्रेबल आप यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर हमारा फॉर लूप चलता है। फॉर लूप इज गोइंग टू अप्लाइड ओवर दैट पर्टिकुलर आइट्रेबल, जो भी आइट्रेबल आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर हमारा फॉर लूप चलता है। ठीक है, सो आफ्टर रनिंग दैट फॉर लूप, जो भी एलिमेंट हमको मिलते हैं, दैट एलिमेंट इज नथिंग बट योर आई। So for the first time I value is 1, next time I value is 2, next time I value is 3. So मैं इसको दिखाता हूँ कोडिंग के थ्रू। Let me show you with coding. So here for I in string 1, ठीक है, अब समझ लो, when first time this one is run, जब पहली बार ये रन, so your I value is nothing but your first element of your string, that is, फिर अगली बार नेक्स्ट वैल्यू y, अगली बार नेक्स्ट वैल्यू t, अगली बार नेक्स्ट वैल्यू h, अगली बार नेक्स्ट वैल्यू 2, अगली बार नेक्स्ट वैल्यू, दैट्स सी। सेम एज इट इज इफ आई एम हैविंग लिस्ट, मेरे पास स्ट्रिंग नहीं है, मेरे पास है लिस्ट, आई एम हैविंग, सो हियर हाउ वी विल गेट दैट, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं लिस्ट 1 के ऊपर आइटरेट करूं, so based on the element your iteration be done, so for the first time your I value will be, next time I value will be 2, next time I value will be 3, then 4, then 5, then 6, and after that your iteration has been complete, iteration has been complete. So I कुछ नहीं होता है, जो भी सीक्वेंस या आइटरेबल के ऊपर आप चलते हो, फॉर लूप चलाते हो, उसका एक एक करके एलिमेंट विजिट करना ही हमारा आइटरेशन बोला जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। सेम थिंग विद नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज योर टप। टपल में भी सेम चीज ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल ऑफ टपल एज। अगर मैं यहाँ पे टपल ले, सो व्हाट इट विल डू, वन बाय वन इट इज गोइंग टू आइटरेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द टपल। सो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंजेस भी कर रहा हूँ, 1 2 कॉमा हाई हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हाई हेलो like this, and here I am giving tuple। अब अगर मैं रन करूंगा, फॉर द फर्स्ट टाइम योर आई वैल्यू विल बी 1, नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू विल बी 2, नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू विल बी 3, नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू विल बी 4, नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू विल बी 5। सेम चीज विद सेट एज वेल, यही चीज सेट के साथ भी। इफ आई एम टेकिंग सेट एज एन एग्जांपल, तो सेट के एक ही एलिमेंट पे हमारा फॉर लूप चले, सेट के एक एक एलिमेंट पे हमारा फॉर लूप वर्क करे। So if I am taking set here, set see one by one. First case, one is there, so one is your element. Two is there, two is your element. High is there, high is your element. So like that it will be. ठीक है, जो भी एलिमेंट मिलता जाएगा सेट का, वो एलिमेंट आई की वैल्यू पहुंचे, दैट वैल्यू इज नथिंग बट दी आई। अब एक और सिनेरियो यहां बनता है, व्हाट अबाउट डिक्शनरी? If I am considering a dictionary, so for loop will work over dictionary, but dictionary is a key value pair. Dictionary is a key value pair. तो की वैल्यू पेयर में फॉर लूप किस पे वर्क करेगा, कीज पे करेगा या वैल्यूज पे करेगा? एनी, अगर मैं एक डिक्शनरी ले रहा हूं, आई एम टेकिंग वन डिक्शनरी नेम क्लास
then college. Now, if I am applying for loop over this, for int and print I, क्या मिलेगा? Anybody? We will only get keys. कभी भी values access नहीं होते हैं directly. I told you this thing in dictionary. We cannot access values. Values कभी access directly नहीं कर सकते. If you are running for loop as well, for loop will only applicable for keys. सिर्फ keys पे applicable होगा. See. If you are running for loop over dictionary as well, only with keys you can do. So these are the demonstration with respect to for. अब जहां भी doubt हो आप पूछो, then I will discuss next examples or some problems. यहाँ तक किसी को doubt है तो पूछो. Why we use and where we use? Where we have used and? कहाँ पे use हुआ and? मैं समझा नहीं आपका doubt. Yes. What you are asking? Why we use and where we use? Which thing why we use and where we use? किस चीज का कहाँ पे क्या use है? For loop, I told you na, if you want to work with any kind of sequence, list, tuple, set, dictionary, range, string, if any kind of data type is there, in that case, you are going to use your for loop. For loop ही use करोगे in that case. And in real time, this is very, very useful because when we are having a data set, आपके पास खूब बड़ा data set है. Data set is nothing but the Excel file. So in that Excel file, your data is either a text or text is nothing but a string. तो अगर आपको data set को read करना है, you are going to use for loop in that. आपको for loop use करना पड़ेगा. That is the use of that. ठीक है. मैनुअली आप एक एक करके रीड नहीं करोगे कॉलम्स को. आप for loop अप्लाई करोगे उस डेटा सेट पे, आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिलेंगे सारे. That is the use. हाँ, किसी को भी डाउट है गाइस प्लीज पूछ लो यहाँ पे. देन आई विल डिस्कस सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. रेंज फंक्शन रह गया था, चलो उसको भी डिस्कस कर लेंगे. फाइन गाइस, मैं क्या बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ? इज इट? समझ आ रहा है आप लोग को, नहीं आ रहा? पहले ये बताओ. अगर नहीं समझ आ रहा है प्लीज लेट मी नो, आई विल गो डाउन. मैं स्लो हो जाऊंगा बहुत, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बट आई वांट टू गिव एक्स्ट्रा नंबर ऑफ थिंग्स. मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको देना चाह रहा हूँ. देयर इज नो एनी यूज ऑफ रेंज फंक्शन टू एक्सप्लेन इन डेप्थ. मैं डायरेक्टली एक लाइन में बता देता नंबर जनरेट कर. बट इन फॉर लूप आपको कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से मैंने इतना एक्सप्लेनेशन ये रेंज फंक्शन का दिया है. ठीक है, इवन रेंज फंक्शन बहुत है, अभी रेंज फंक्शन में बहुत सारी चीज. ठीक है, सो मैं अपनी लेवल से ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा चीजें आपको दे सकूं मैं उतनी दे सकूं. ठीक है, इवन इन डिक्शनरी ऑल्सो इफ यू विल सी, बहुत सारी चीजें मैंने की. ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने डिक्शनरी में कराई है. इवन दैट इज, आई डोंट थिंक दैट थिंग इज देयर इन करिकुलम. Do you have limit classes? Do you have limited classes, sir? Not limited classes, but we need to follow the curriculum. If you want to get 6 months, like if you are going to get job in 6 months, then within that 6 months, we need to complete each and everything. Is it or not? वो अगर 8 months जाएगा, then you guys will think कि बहुत ज्यादा कोर्स स्क्रैच हो रहा है, लाइक इट इज वेरी पुश, लाइक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. ओके, दैट इज द रीजन. तो मैं एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ. दैट्स व्हाई इट इज समथिंग लाइक, जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो कुछ ज्यादा ही है. जितना आपके करिकुलम है उससे बहुत ज्यादा चीजें मैं बताने की कोशिश. दैट्स व्हाई समटाइम्स इफ यू आर थिंकिंग दैट इंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू फास्ट, दैट इज फाइन, बट ट्राई टू ग्रैब द थिंग्स. क्योंकि देखो होता क्या है, यू वांट टू गेट जॉब इन 6 months, सो विद इन दैट 6 months यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 6 months में कोई होगा जो पानी पिला देगा, दैट यू विल गेट जॉब. इट इज नॉट लाइक. आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट. ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी पाइथन के सेशंस, इन दैट यू विल बी कैपेबल टू इम्प्लीमेंट अ प्रोजेक्ट. आप प्रोजेक्ट बनाओ. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस मच ऑफ थिंग्स. ये जो बेसिक्स है ना, ये ऐसी चीज होती है, अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना प्रोजेक्ट को, और आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कभी प्रोजेक्ट नहीं बना. 100% यू विल नेवर इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट. कभी नहीं बना, क्योंकि बेसिक्स आर वेरी वेरी. ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि सेशन बहुत तेज जा रहा है,
ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर बहुत ज्यादा तेज जा रहा है देन यू कैन से टू मी, और अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे कि सेशन बहुत तेज जा रहा है, आई विल स्लो डाउन। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्लो हो जाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो पढ़ाना है, आपको समझ आना चाहिए। You told us we cannot take it, but when we take input from the other side, the input value by default is string. Then that time can we get an error? A string is not an integer, Nitish. A string is not an integer. String is an iterable. String हमारा iterable होता है. String is an iterable. So it is an iterable. That's why you can use for loop over that. आप for loop चला सकते. Okay. Integer is the data type which is not an iterable. Whatever iterables are there, only in that you can apply for. सर यू टोल्ड अबाउट लिस्ट, यस लिस्ट इज एन आइटरेबल। इस वजह से आप सिर्फ इतना याद रखो कि आइटरेबल्स क्या होते हैं। ओनली इन आइटरेबल्स यू कैन अप्लाई फॉर लूप, सिर्फ इतना दिमाग लगाना और कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना। आइटरेबल्स आपके ये होते हैं, अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया, मैंने दे दिया 10.5, आइटरेबल नहीं है, एरर आएगा। आपने बूलियन दे दिया, ट्रू दे दिया, आगे कुछ भी आप दे दो, एरर आए। ओनली विद आइटरेबल्स यू कैन यूज, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि स्ट्रिंग दिया मैंने तो ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर लूप इन्हीं पे वर्क करता है। आइटरेबल्स वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर मोर देन वन वैल्यूज, दैट इज नोन एज आइटरेबल एंड योर फॉर लूप इज एप्लीकेबल ओनली विद आइटरेबल्स। इफ यू आर नॉट हैविंग आइटरेबल्स, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज फॉर लूप इन दैट केस। फॉर लूप नहीं रिकमेंड किया जाता है इन दैट पर्टिकुलर केस। हाँ हाँ गाइस, एक बार मुझे बता दो, क्या मैं पेज स्लो डाउन करूं? क्या पेज स्लो डाउन करूं मैं, या नॉर्मल पेज सही है कितना चल रहा है? फाइन फाइन, ओके फाइन, लेट्स गो अहेड। ओके फाइन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर, आई हैव नॉट टेकन एग्जांपल ऑफ रेंज फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज फंक्शन? सपोज दैट आई वांट टू जनरेट generate numbers from 0 to 9, तो आप रेंज का यूज करो। यू विल राइट समथिंग लाइक रेंज 0 to 10, आप ऐसे कुछ लिख, बट यहाँ पे आपको रेंज 0, 10 दे, यू आर नॉट एबल टू सी नंबर्स। तो मैंने ऊपर लिखा था, आई हैव रिटन दैट, इफ यू विल सी आई हैव रिटन हियर, आइदर यू कैन यूज लूप्स, तो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू सी द नंबर्स। सो हाउ यू कैन यूज दैट? वी कैन यूज लाइक फॉर आई इन रेंज एंड देन यू कैन प्रिंट योर आई वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप समझ, रेंज ऑफ 1, 10, what are the numbers which are generated with range, 10? Anybody? just इस पे फोकस करना। what are the numbers which are generated with range 0, 10? कौन से नंबर जनरेट होंगे 0 से 10 के बीच? 0 to 9। सो हमारे जो नंबर जनरेट होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जब पहली बार फॉर लूप रन हो तो आई की वैल्यू क्या होगी इसमें से? बिकॉज फॉर लूप क्या होता है, जो हमारे नंबर्स जो भी आइटरेबल होगा उसके एक ही एलिमेंट को वो विजिट करता है। तो पहली बार में आई की वैल्यू क्या होगी? अगर ये मेरा आइटरेबल है तो इट इज 0। नेक्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या होगी? 1। नेक्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या होगी? 2। नेक्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या होगी? 3। नेक्स्ट केस में 4, एंड लाइक दैट you will go। So with the help of for loop also you can implement this type of thing। आप कर सकते हो। Let's start with coding। Shall I start coding now? कोडिंग करूंगा, प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट और टू प्रिंट अ टेबल ऑफ अ गिवन। एक नंबर दिया हुआ है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट द टेबल ऑफ दैट, मुझे उसकी टेबल प्रिंट। सो जस्ट आई एम टेकिंग वन नंबर एज एन इंट, सम नंबर इज देयर, and our objective is to print the table of that
सो एंटर अ नंबर। एक नंबर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं, फर्स्ट टाइम आस्किंग फ्रॉम द एंड यूजर एंटर अ नंबर। सो यूजर हैज गिवन सम नंबर, सपोज दैट यूजर हैज गिवन नंबर एज 2। तो अब कोई लोग दिमाग में रखना, यूजर हमारा बना, अगर मेरे को टेबल क्रिएट करनी, देन वी विल क्रिएट समथिंग लाइक 4 into 1 4, 4 into 2 like this, 4 into 2 8, then 4 into 3 12, and it will go till 10, it will go till 10 and we will get 40. Is it or not? ऐसे ही टेबल हमारी होती है कि नहीं होती? Anybody? Our table is like that or not? Yes, our table is. अब एक चीज बताना, क्या ये 4 जो है, जो पहला वैल्यू है, वो हमेशा फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? पूरी टेबल में जो पहला 4 है वो हमेशा फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? ये इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो 4 है वो हमेशा 4 ही रहेगा। नेक्स्ट केस, दिस 1 2 3 4 अप टिल 10, क्या ये नंबर जनरेशन है कि नहीं है? 1 से 10 तक अगर मैं नंबर जनरेट कर दूं तो पहला नंबर 1 होगा, दूसरा नंबर 2 होगा, तीसरा नंबर 3 होगा, ये होगा कि नहीं होगा? If I am going to generate numbers from 1 to 10, we will get our number. So how we will do it? So just generate numbers for I in a range of starting from 1 go up till 10. मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ नंबर जनरेट कर रहा हूं। What I am doing is this 1 2 3 these numbers I am generating. Okay, I am just generating these. So after this, if I am printing my I value, अगर मैं I को प्रिंट कर रहा हूं, see our numbers are, for example अगर मैंने दिया 4, our numbers are generated from 1 to 9. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 दिया है, मुझे 11 देना। see our numbers are generated। अब मुझे क्या करना है? because first case your I value is 1, next case I value is 2, next case I value is 3। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो भी num की वैल्यू है उससे I को मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे क्या करना है? num into आपकी टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, कोई भी टेबल आप ले लो, 18, आपकी 18 की टेबल बन गई, any table। So what I am doing is num value is fixed, num value is 4 which is fixed। What about I? I is the value which is generated from here। So for the first time I value is क्या नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया? It will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So first case I value is 1, num value is 4, 4 1 ja 4, then next time I value will be 2, so 4 into 2 that is 8। so ऐसे आपकी टेबल जो है बनती चली जाएगी। Simple। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज दिस वन इज क्लियर और नॉट? इज दिस एग्जांपल इज क्लियर और नॉट? सिंपल सा एग्जांपल है, 4 आपका फिक्स्ड, your 4 is fixed, only we are going to perform changes in my I value, I value changes we are doing। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो उससे पूछ, बिकॉज दैट इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। सर टेबल फॉर्मेट में, हाँ वो मैं बताऊंगा अभी टेबल फॉर्मेट में कैसे। हाउ टू डिफाइन नम वैल्यू इज स्टार। नम वैल्यू आपकी मैं इनपुट ले रहा हूँ, जो भी इनपुट है, अगर आपने 4 दिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 into 1 4, 4 into 2 8, लाइक दैट। सो नम वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं और वही इनपुट हम यहाँ पे पास करे दे रहे हैं और वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है और आपको रिजल्ट दे रहा है। नम वैल्यू तो यूजर से ले रहा है। अब कोई कह रहा है इसको टेबल फॉर्मेट में कैसे करें? हाउ टू डू इट इन टेबल फॉर्मेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेबल फॉर्मेट में इसको कैसे करें? टेबल फॉर्मेट मींस इन दिस फॉर्मेट आई वांट माय रिजल्ट, इन दिस फॉर्मेट आई वांट माय रिजल्ट। ठीक है, इस फॉर्मेट में मुझे रिजल्ट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? अंडरस्टैंड
फर्स्ट इज योर नम, पहले क्या आएगा आपका नम आएगा, नम इज योर फर्स्ट थिंग. आफ्टर दिस नेक्स्ट व्हाट यू विल गेट, सॉरी सॉरी ये यहां नहीं करना है. हाँ, फर्स्ट आई एम गेटिंग नम. आफ्टर दिस यू आर हैविंग स्टार, सो स्टार की बजाय मैं ले रहा हूं एक्स. एक्स. So num is my number that is 4. After this star means multiplication. Multiplication के बाद मैं क्या लूंगा, I क्या है, I हमारा नंबर. After I will take something like equal, और equal to हमारा क्या होगा, this num into I. मैंने सिर्फ प्रिंट किया है. Num is what? Num is 4. After this star is there, so I have written this. Then I is there, so मैंने I की वैल्यू यहाँ पे ले ली. Then equal is there, so just I have taken equal. Then what is my result? ये result कहाँ से आ रहा है? This result is nothing but the multiplication of num and I. See, table format. Table format. क्या ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ. In this question, if any doubt is there, please let me. किसको नहीं क्लियर हुआ बताओ, मैं एक्सप्लेन करूँ उस चीज. अरे भाई कमेंट कहाँ पे है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है. दिस पार्ट आई टोल्ड यू टू एक्सप्लेन, जस्ट टू शो यू द फॉर्मेट. अगर आप इसको रिमूव भी कर दोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके फोन में. सी, इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस वी आर डूइंग. नम वैल्यू इज नथिंग बट द नंबर हुज टेबल वी वांट. Okay, then I want multiplication, that is x. Then I am having I is nothing but the numbers, and then equal to is fixed, so I've just taken equal to. और आपका रिजल्ट कहां से आएगा, नम इंटू आई. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आपका रिजल्ट आएगा. That's only two response I have received. Please let me know is it clear or not. अगर नहीं क्लियर हुआ है आप लोग बताओ. Fine. So next program is factorial of a given number. Everybody is aware about factorial. Factorial क्या होता है, क्या आपको पता है? Anybody? Factorial of a number. Factorial means suppose that if someone is asking 5 factorial, किसी ने बोला 5 factorial चाहिए. So 5 factorial means starting from 1 up till 5, all the number multiplication. So the result will be 5 4 20 3 62 1. Same as it is if someone is asking 10 factorial. 10 factorial का मतलब क्या है? Starting from 1 multiply the numbers up till 10. This is the meaning of factorial. ये मतलब होता है factorial का. This is the meaning of. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम. हाउ वी विल कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम. सो पहले तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, इफ यू आर हैविंग सम मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करते इन रियल टाइम, हाउ यू आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन. सो योर मल्टीप्लिकेशन विल बी,
योर मल्टीप्लीकेशन विल बी, कैसे आप मल्टीप्लीकेशन करते हो? We are doing multiplication. Suppose that I want to multiply these three numbers. How we will do it? We will first multiply these two numbers. Whatever result is coming, 2 1 जा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं सेव कर लूंगा एक वेरिएबल के अंदर. आई विल स्टोर दिस इन वेरिएबल, सम वेरिएबल लाइक टिक पी, पी इज प्रोडक्ट. फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट को लूंगा, दैट इज योर 3, एंड देन आई विल मल्टीप्लाई दीज टू, एंड व्हाटएवर रिजल्ट इज कमिंग, दैट इज योर 6. नाउ आई विल असाइन माय पी वैल्यू एज 6. दैट्स इट. तो पहले मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट निकालूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको थर्ड से मल्टीप्लाई. इन दिस वे वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन और नॉट. इस वे से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते? एनीबॉडी? If someone is saying multiply 1 into 2 into 3, how you will do multiplication? 1 into 2 you will do first. Whatever result is coming, then you will multiply that result with next element, that is like this you will do. Okay, ऐसे कर. Now same thing we need to work with programs as well. Programs में भी ऐसे ही कोड किया जाता है. So how we will do it? So first thing is ask from the end user to enter some number. कोई नंबर इनपुट करने के लिए मैं कह रहा हूँ, एंटर अ, so user will pass some number user will pass. Okay, when user is passing some number, कोई number user pass करे, when user is passing some number, for example user has passed 5, तो अगर 5 उसने दिया तो मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर्स जनरेट, बिकॉज देन ओनली वी विल परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे? देखो यूजर ने तो 5 दिया है, मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर्स जनरेट करने पड़े, देन ओनली वी विल परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, तभी हम इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जनरेट नंबर्स फ्रॉम फॉर आई इन रेंज ऑफ, मैं नम तक नंबर जनरेट करूं. सी फॉर एग्जांपल इफ आई हैव गिवन 5, सो सी नंबर्स आर, एंड वन मोर थिंग, 1 2 नम प्लस, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो नम से होगी और 5 तक जाएगी. 1 2, so just I have generated these numbers. मैंने सिर्फ नंबर जनरेट. यहां तक किसी को डाउट है तो in this, if any doubt is there, please let me know. Okay, after this, once number has been generated, अब मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा दो एलिमेंट्स और इन दोनों का करूंगा प्रोडक्ट. What I will do is I will take two elements and I will calculate the product of this. So what I will do is मैं क्या करूंगा, initially let me take one variable as prod. मैंने एक वेरिएबल लिया prod नाम से. अब मैं क्या करूंगा, मैं इस prod को अपडेट करता रहूं. I am going to update this prod. How we will update? Prod is equal to prod into I. और फिर मैं क्या करूंगा, इस prod को प्रिंट कर. जिसको समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन विद आइटरेशन, मैं आइटरेशन से एक्सप्लेन करूंगा. दैट्स इट. नाउ सी, नाउ सी हाउ इट इज वर्क, कैसे ये वर्क कर रहा है, दैट आई एम गोइंग टू शो. सी दिस इज माय, so suppose that my number value is 4. 4 is my input. So what are the numbers which will be generated with this range function? Range function से कौन कौन से नंबर जनरेट होंगे अगर नंबर की वैल्यू 4 है तो? एनीबॉडी? What are the numbers which will be generated with this? If user input is 4, अगर यूजर का इनपुट 4 है तो कौन कौन से नंबर जनरेट होंगे? 1 2 3 4 आर द नंबर्स व्हिच विल बी जनरेटेड. सो 1 2. नाउ व्हेन फर्स्ट टाइम लूप इज रन, फर्स्ट आइटम और फर्स्ट टाइम व्हेन लूप इज रन, prod वैल्यू इनिशियली योर prod वैल्यू इज 1. पहले आपकी इनिशियल prod की वैल्यू क्या थी? 1, तो आपकी 1 ही थी. अब कोई बताएगा i की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट टाइम? व्हाट इज माय i वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम? इट इज 1 is my I. अब मैं इस लूप के अंदर चला. So when I am coming in this loop, prod is equal to initial prod value. So इस पॉइंट पे मेरी prod की वैल्यू क्या है? 1. 1 into I value is what? I value is 1. So 1 into. So after first iteration,
my prod value will be now second iteration. Second iteration. Now when second iteration is coming, what is my prod value for second iteration? Prod की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए? इट इज 1. 1 रहेगी ना, 2 कहां से हो जाएगी? 1 ही तो चल रही है. I की वैल्यू बदलेगी, prod की वैल्यू थोड़ा ना बदलेगी. So I prod value will be, what about I value? So I is nothing but the numbers which are generated. So 1 के लिए हमारा लूप चल चुका है. The I value is nothing but your 2. So I value will be, again prod is equal to, prod value is 1. 1 into I value. I value is, what is my prod value here? It will be now third iteration. When third iteration is in, third, when third iteration is running, anybody, what is my prod value and what is my I value? क्या मेरी prod की वैल्यू रहेगी और क्या मेरी I की वैल्यू रहेगी? Prod value is the updated value. जो आपकी updated value है ना, वो आपकी prod की value. So that is your, what is your I value? I value is nothing but your third iteration we are doing. So 3 is my I value. Again we are calculating prod. So prod is equal to, initial prod value is 2, I value is, so prod value is updated to 6. यहाँ पे prod की value जो आ रही है वो आ रही है. After this fourth iteration, when fourth iteration is there, what is my prod value? It is 6. जो updated prod की value होती है वो for loop के अंदर consider, ठीक है? That is your 6. I value will be 4. Now again, prod is equal to, initial prod is 6 and I value is 4. So prod value is coming as 6 4 ja 20. Now your all the iteration has been completed because I की value खत्म हुई, आपके iteration. At last your prod value is 24. So if 4 is my number, क्या factorial जो होगा वो 24 होगा कि नहीं? Tell me. If I want to find the factorial of 4, is it 24 or not? Yes, it is 24. It is 20. So we are getting 24 as a result. अब मुझे ये वैल्यूज देखनी है. हर आइट्रेशन पे मुझे अपनी प्रोड की वैल्यू देखनी कि प्रोडक्ट क्या क्या आ रहा है. So how we will get that? So we can do, instead of printing this outside, if you are printing this inside for, अगर आप for loop के अंदर इसको प्रिंट करा दोगे, then you will see all the numbers will come. 1 2 6 24. See, 1 2 6 24. So that is nothing but your updated prod value. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल prod जो है वो 1 है. I am going to update that prod value in my for, because I want to calculate the product of all the numbers. सारे numbers का product चाहिए. तो directly we cannot calculate. What we are doing is, we are first calculating the product of initial product value and I value. अब इसका जो भी result आएगा, then I will take that and I will take the number and then I will multiply that, these two. And then whatever result is coming, that is my prod value. Again, I will take that prod value and next number, next I value, and then multiply. And like this it will go. तो ये हमारे iterations हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं. अब यहाँ पे किसी को डाउट है तो in this iteration, if any doubt is there, please let me. जिसको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है बताओ मुझे. ये iteration जिसको क्लियर नहीं हुआ है, you can just let me know, I can explain. Sir, we can take can factories using math fun. Yes, we can take that as वो भी है option. Okay, that is present. But here we are manually writing the, हम लोग manually code को write. Now, with respect to for loop, there are lot of problems which are there in practice sheet. तो मैं कुछ problems आप लोगों को बताता हूँ. You guys can give a try. If it is not fine, then you can tell me.
check a factorial of a number. So we have solved this. Armstrong number, right now you cannot solve it because without for loop you cannot solve Armstrong. तो थोड़ा simple problem मैं लेता हूँ. This problem is, ये problem है जो मैं ले रहा हूँ. Write a Python program which iterates over the integers from 1 to 100. जो कि iterate करेगा numbers 1 से 50. From 1 to 50 it is going to iterate. Okay, after this, for multiples of 3, जिनका भी multiple 3 हो, I need to print fis instead of the number. मुझे number नहीं print करना है, मुझे fis print करना है वहां. And for the multiples of 5, जो multiples of 5, in that case I need to print bus. वहां पे मैं bus print. For numbers which are multiple of both 3 and 5, जो कि multiple है 3 के भी और 5 के भी, in that case we need to print fis bus. तो ये हमारा क्वेश्चन. तो अब बताओ इसमें क्या अप्रोचेस यूज हो, व्हाट अप्रोचेस वी नीड टू यूज. दिस इज माय क्वेश्चन. जस्ट थिंक व्हाट अप्रोच वी नीड टू यूज हियर, और व्हाट कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज. दिस इज माय पॉइंट. यस करेक्ट. फर्स्ट स्टेप इज जनरेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. पहले तो ये करना है, नंबर जनरेट करने हैं फ्रॉम 1 to 50 फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1, 50. So our numbers are generated. So if you are printing my I value, you will see your numbers are generated from 1 to, आपके numbers generate हो जाएंगे 1 to. After this, they are asking for numbers which are multiple of both 3 and 5. जो कि multiple है 3 के भी as well as 5. So if I modulus 3 is equal to 0 and I modulus 5 is equal to 0, अगर दोनों चीजें सही, in that case I need to print fis bus. Fis. Other than this, second condition they have given, if I modulus 5 is equal to 0, that means for multiples of 5 print bus. आपको बस प्रिंट करना है. And if I modulus 3 is equal to 0, we will print fis. That's, see, fis bus, fis bus. Where are the multiples of 5? We are getting fis bus. And whatever multiples of 3 is there, we are getting fis for them. Okay. And wherever multiple of 5 is there, we are getting bus. Wherever multiple of 3 and 5 both is there, we are getting fis. Ask your doubts. जिसको नहीं क्लियर हुआ है, प्लीज लेट मी नो इन दिस. Those who is not clear with this, please let me know. किसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं समझ में. Only few people are there who are active. Other than this, I think they I want to show 3 fis 5 bus. So same thing is there. No? If 3 and 5 both are divisible, जो कि नंबर है जो कि मल्टीपल है 3 के भी और 5 के भी, तब हमको फिस बस प्रिंट करना है. अगर मल्टीपल ऑफ 5 है उस केस में हमें बस प्रिंट करना है. अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उस केस में मुझे फिस प्रिंट करना है. तो यही क्वेश्चन है हमारा. सर आउटपुट इज नॉट क्लियर. सी, दे आर आस्किंग व्हाटएवर नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3 and 5, सिर्फ उस पे काम करना है. तो अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू देखोगे तो जब आई की वैल्यू 1 होगी कुछ नहीं प्रिंट. जब आई की वैल्यू 2 होगी कुछ नहीं प्रिंट होगा. जब आई की वैल्यू 3 होगी तब देखो फिजा. फिर आई की वैल्यू 4 हुई फिर भी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि हमने प्रिंट किया ही नहीं आई. Okay, if these 3 conditions are there, then only it will print something.
अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट आई, तो क्या होगा, जो मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है वो भी दिखे। देखो, ये नंबर्स थे जो पहले नहीं दिख रहे, बिकॉज दीज आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, दीज आर नॉट मल्टीपल ऑफ 5, दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर नॉट शोइंग प्रीवियसली, बट नाउ इट इज शोइंग बिकॉज आई हैव टेकन एल्स पार्ट एंड आई एम प्रिंटिंग माय आई। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये जितने भी आई व नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे हट जाएंगे। इस वजह से पहले के केस में आपको आई की वैल्यू नहीं दिखी, इसलिए क्लियर नहीं है। हाँ, 3 फेज 5 बस बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, दैट्स इट, हो गया। जस्ट प्रिंट आई बिफोर योर स्टेटमेंट, इट विल प्रिंट। जो भी स्टेटमेंट आपका है उससे पहले आप आई को प्रिंट कर दोगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आके ठीक है। So after this, so these are your normal forms. Same as it is, if you are having, there is one more concept that is known as nested form. Nested form. What is the meaning of nested form? Loops inside loops inside loop is known as nested form. एक लूप है, उसके अंदर एक और लूप, that is your nested form. Okay, let me write this syntax, then you'll be more comfortable. Right on. For I in the range of n, for j in the range of or m, something like m and b. जहां पे मैं लिख रहा हूं कुछ statement और, so this type of scenario is known as nested for. So one for loop is there, inside that one more for loop is there. That is the meaning of nested. So when I am talking about nested for, there is one important point which is there that you guys need to remember. For each iteration, for each iteration of inner of outer loop, complete inner loop will be executed. Complete inner loop will be executed. This line is very very important. क्या मतलब है इसका समझना? Suppose that I am writing for I in the range of something like 3. Here I am writing for j in the range of, मैंने कुछ यहाँ पे, anybody just tell me what are the numbers which are generated with this? इससे कौन कौन से नंबर जनरेट होंगे? This one. What are the numbers which will generate with this? बताओ. Range of 3. What are the numbers which will generate with this? Range of 3. It is 0 1. ठीक है, 0 1. अब इससे कौन कौन से नंबर जनरेट होंगे? With this, how many numbers will be generated? 0 and 1. ठीक है. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है समझ लो. जब I की वैल्यू 0, when I value is 0, your j will be executed 2 times. इसका मतलब क्या है? आउटर लूप के हर आइट्रेशन के आउटर लूप के इनर लूप आपका कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा. इसका मतलब ये है कि जब आई की वैल्यू जब 0 है, कंप्लीट इनर लूप एग्जीक्यूट. Same as it is when your I value is 1. In this case, j will be executed again 2 times. Executed again 2 times.
Same as it is when your I value is 3 or 2, again J will be executed 2 times. So if someone is asking total number of iteration in this scenario, what are the total number of iteration which is, that is nothing but your number of iteration in outer loop जितने भी outer loop के iteration होंगे into number of iteration in inner inner. So अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं आपको, so how many iterations are there for outer? 3 iterations. How many iterations are there for inner? 2 iterations. So total number of iteration in this case will be 6. So total जो iteration होंगे यहाँ पे, that is your 3 into 2 is equal to 6. तो अगर मैं यहाँ पे I और J की वैल्यू प्रिंट करा के आपको दिखाऊं, see I value is, or let me take I comma J directly. See, first case is I is 0. जब I की वैल्यू 0 हुई है, आप देखो J जो है वो 2 बार चला है. जब I की वैल्यू 1 हुई तो J जो है 2 बार चला है. तो इसका मतलब क्या है, हर एक आइट्रेशन की, आउटर लूप के हर एक आइट्रेशन के लिए जो हमारा इनर लूप है ना, वो पूरा चलता है. तो 0, जब मेरी I की वैल्यू 0 थी, हमारा J जो है वो 2 बार चला है, बिकॉज 2 आइट्रेशंस आर देयर. Same as it is when my I value is 1, then again your J loop is running 2 times. जब I की वैल्यू 2 हुई, फिर भी हमारा इनर लूप जो है वो 2 बार चला. तो हर एक आइट्रेशन के लिए आपका जो इनर लूप होता है पूरा चलता है, हमेशा पूरा चलता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. For each iteration of outer loop, whatever outer loop you have taken, for each iteration, that means first iteration is 0. When I value is 0, your complete inner loop will be executed. तो इनर लूप के 2 आइट्रेशन थे, जब I की वैल्यू 0 होगी तो J जो होगा वो 2 बार चलेगा, बिकॉज 2 आइट्रेशंस आर देयर फॉर इनर. डाउट पूछो. In this, if any doubt is there, please let. This point is clear or not? कहाँ पे डाउट आ रहा है प्याली आपको, प्लीज लेट मी नो. 2 means I don't know. Okay, try to understand. ये लूप कितनी बार चलेगा, कोई बता सकता है? हाउ मेनी टाइम दिस लूप विल रन? अगर सिर्फ ये लूप है आपके पास तो कितनी बार ये लूप चलेगा? जितना रेंज नंबर जनरेट करेगा उतनी बार ही तो चलेगा. तो यहाँ पे कितने नंबर जनरेट कर रहा है? 2 नंबर जनरेट कर रहा है. दैट मीन्स जब आई की वैल्यू 0 होगी, जब आई की वैल्यू 0 होगी, हमारा जे जो है, जितने भी आइट्रेशन जे में होंगे उतने बार चलेंगे. तो जे के 2 आइट्रेशन है, तो जब आई की वैल्यू 0 हुई तो जे जो है वो 2 बार चलता है, बिकॉज 2 आइट्रेशंस आर देयर. ये इसका मतलब है. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. और आई इन range of something like I am giving 3, and then I am taking for j in the range of 3. समझ, what are the numbers which will be generated here? 0 1 0. यहाँ पे कौन कौन से नंबर जनरेट होंगे? 0 1. अब जब I की वैल्यू 0 होगी, कोई बताएगा जे लूप कितनी बार चलना है? जे लूप कितनी बार चलना है, बस इतना बताओ. J loop will execute how many times in this scenario? 3 times. 3 times. क्योंकि 3 आइट्रेशन है, 3 वैल्यूज है तो 3 बार चलेगी. So 3 times this J loop will run. Okay. So if I will calculate total number of iteration, तो आउटर लूप के कितने आइट्रेशन होंगे? आउटर लूप में कितने आइट्रेशन होंगे? 3 आइट्रेशन. When I value is 0, I value is 1 and I value is 2. So it is nothing but your. अब इनर लूप के कितने आइट्रेशन होंगे? 0 1 2, that is
सो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन विल बी 9। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, अब इसका मतलब क्या है समझना, when your I value is 0, जब आपकी I value 0 होगी तो आपका J जो है वो पूरा रन, J will execute completely. Completely means your J for the first time J value will be 0, J value will be 1, J value will be, then your I value will be changed to 1. When I value is 1, again J जो है वो 0 पे चलेगा, J जो है वो 1 पे चलेगा, J जो है वो 2 पे चलेगा। तो ऐसे देख 9 इटरेशन है ये। I value is 0 and J value is 0. I value is 0, J value is 1. I value is 0, J value is 2. जब अब यहाँ पे देखो, जब I की वैल्यू 0 है तो आपका J जो है वो 3 बार चल रहा है, बिकॉज 3 वैल्यूज आ, तो यही चीज मैंने बताई है। क्या अब क्लियर हुआ आपको प्रांजल? ठीक है, फाइन। सो लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस। सपोज दैट पाइथन प्रोग्राम, तो प्रिंट, मैं एक सिंपल सा पैटर्न लूंगा, बहुत ट्रिकी नहीं लेने वाला हूं मैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न मींस लाइक दिस यू नीड टू इंप्लीमेंट वन पैटर्न। एक इस तरह का आपको पैटर्न बनाना है, एंड फॉर दिस वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप्स। बेसिकली नेस्टेड लूप जो यूज होते हैं ना, वो पैटर्न्स के लिए होते हैं। नेस्टेड लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर पैटर्न्स। इस तरह से मुझे एक पैटर्न बना, आई वांट टू इंप्लीमेंट अ पैटर्न लाइक, ठीक है। तो अगर मैं पैटर्न दिखाऊं, जस्ट okay, let me take like this as well. So this type of pattern I want to implement. So ये कैसे करते? First try to understand how many stars are available in this. कितने star available हैं? So if you will see 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 star is there. And how many rows are there? 2 to 4, 1, 5. 6 star is there and 5 rows are there. So total number of star in this case will be, total number of star 6 5 ja 30. 30 stars are there in this. ठीक है, 30 stars है हमारे यहाँ। 30 stars are there in this. ये पे वर्क नहीं कर रहा, ओके। 30 stars are there in this. So पहले तो आपको कोड लिखना पड़ेगा which will generate stars, which will generate 30 stars. So कैसे करेंगे? For I in the range of 6. 6 क्या है हमारा? 6 is nothing but your 0 1 2 6 नहीं 5 हो। Okay. 5 is nothing but your rows. Rows का मतलब होता है ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, 5 rows. तो 5 rows I have taken. Then for j in the range of 5, 6. 6 क्या है? 6 बोला जाता है कॉलम्स को। कॉलम मीन्स दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकेंड कॉलम, दिस इज योर थर्ड कॉलम। अगर मैं बताऊं कॉलम्स क्या है, देन see, if this is my pattern, so in this pattern, if this is my pattern, your column is this is your column. ये जो ऊपर से है ना, this is your first column, this is your second column, this is your third column, this is your fourth column, and this is your fifth. ये होते हैं columns. Coming to the rows, this is your row 1, this is your row 2, this is your row 3. So columns are your 6. 6 जो हैं वो हमारे हैं columns, and rows are nothing but your 5 are your, so 6 rows, 5 rows and 6 columns are there. So if I am running like this and I am going to print a star, कोई बता सकता है कितनी बार स्टार प्रिंट होगा if I am going to run like this?
if I am going to run like this, how many times, how many iterations this loop will do? How many iterations this loop will do? It is 6 times, 30 times nested loop. अब यहाँ पे देखो, जितना भी इसका इटरेशन होगा, जिसका भी इतना इटरेशन होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है टोटल नंबर ऑफ इटरेशन. सो हियर आल्सो 5 is there and 6 is there. 6 5 जा 30. So total 30 stars will be in here. So 30 stars तो बन. Now next is what? Next I want that कि एक लाइन में स्टार है. So if you want to print anything within a same line, अगर आपको same line में कोई चीज print करनी है, so for that we are having n is equal to like this. So अगर मैं ये लिखता हूं, then you will see you are having everything in same line. अगर आपको same line में कोई चीज print करनी है, if you want to print anything in same line, you can do it with the help of and, with the help of this and. ओके, ये एंड क्या करता है, आपके कंटेंट को सेम लाइन में प्रिंट करने के काम करता है. अगर आपको कोई भी चीज सेम लाइन में प्रिंट करनी है, यू विल जस्ट राइट एंड. अब क्या है, अब यहाँ पे केस क्या है, सी आई वॉन्ट ओनली 5 स्टार्स इन आर. मुझे 5 स्टार चाहिए एक रूम, बट यहाँ पे सारे स्टार ही एक रूम में आ गए. सो व्हाट आई विल डू आफ्टर 5 आइट्रेशन, देखो जब भी मेरे 6 बार ये आइट्रेशन चलेगा, ओके, आफ्टर 1 आइट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाऊं. सो व्हेन यू आर राइटिंग लाइक दिस, प्रिंट विदाउट एनीथिंग, इट मींस दैट आई एम मूविंग इन नेक्स्ट लाइन. मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूं. दैट्स सो ये प्रिंट क्या करता है, बेसिकली ये प्रिंट हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करने के काम करता है. अगर आपको नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, यू विल यूज दिस. और ये नेक्स्ट लाइन में कब मूव करना है, when your I value is 0 1 2 3, when your I value is 0, your iteration will be 0 1 2 3 4 5. तो जब मेरे 5 स्टार 6 स्टार हो जाएंगे, जब एक लाइन में 6 स्टार हो जाएंगे, तब मुझे नेक्स्ट लाइन में मूव करना. तो मैंने क्या किया, जब एक आइट्रेशन ये पूरा खत्म होगा, मैं उसके बाद प्रिंट में प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहा हूं, दैट मींस मूव इनटू नेक्स्ट. बस इतना मैंने किया. दैट इज वन पैटर्न व्हिच इज ask you doubts in this. If I want every line 10 स्टार, कितने भी स्टार आप कर सकते हो. अगर आपको, आप कह रहे हो कि एक लाइन में मुझे 10 स्टार चाहिए, so that is nothing but your column. So column change you can do, you can take 10 here, that's आपके 10 स्टार. Any number of star you can take like this, any number of star you can take like this. अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ. In this, if any doubt is there, please let me. सर लास्ट प्रिंट इज विद द फर्स्ट. यस, लास्ट प्रिंट जो है ना, जब मेरा पहला इटरेशन ये खत्म हुआ, 0 के लिए मेरा जो जे लूप है वो पूरा चला है. जब मेरा जे लूप पूरा चल गया, तो कितनी बार में जे लूप चलेगा, कितनी बार स्टार प्रिंट होगा, 5 बार स्टार प्रिंट. जब 5 बार स्टार प्रिंट हो गया, मुझे नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट लगा दिया. तो ये जो प्रिंट है ना, ये इस फॉर लूप के लिए है. It is outside this for. Okay, so this print statement is a part of this outer loop. Okay. Repeat this example, try to understand here. देखो, जो मेरा ये वाला लूप होता है, outer loop, that is for rows. Rows means this is your row 1, row 2, like that. This is your row. So this is for rows. So कितनी रो है, first row, second row, third row, fourth row, 5. So 5 रो है, so just I have written 5. कमिंग टू द कॉलम्स, ये जो होता है ना, ये इनर लूप कॉलम्स के लिए होता है. बेसिकली कॉलम्स मींस हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन ईच लूप. सो फर्स्ट टाइम 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार इज देयर इन ईच लूप. सो मैंने लिखा 6. अब क्या होगा समझ, व्हेन योर आई वैल्यू इज 0, जब मेरी आई की वैल्यू 0 होगी, इन दैट केस आई नीड टू रन माय जे लूप. बट हाउ मेनी टाइम्स जे लूप विल रन, जे लूप विल रन 6 टाइम्स. 6 टाइम्स मेरा जे लूप रन करे, तो कितनी बार स्टार प्रिंट होगा, 6 बार स्टार प्रिंट. व्हेन योर आई वैल्यू इज 0, योर जे इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, तो 6 बार हमारा स्टार प्रिंट.
जब 6 बार हमारा स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे मूव करना है नेक्स्ट लाइन। तो मैंने क्या लगाया, प्रिंट लगाया। ये प्रिंट का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन में मूव कर। मुझे सेम लाइन में कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो आप सिर्फ प्रिंट जब लिखते हो, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में मूव। अब क्लियर हुआ प्रांजल साहब? And is basically for same line. Just try to understand. Suppose that I am having something like for I in the range of 10. ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट है। तो अब इस केस में होगा क्या समझना, एवरी एलिमेंट इज कमिंग इन नेक्स्ट लाइन। सारे एलिमेंट जो है वो अगली लाइन में आ रहे हैं, मुझे अगली लाइन में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट एवरीथिंग इन सेम लाइन। So for that you need to write something like and is equal to this. This means that your content will not move into next line. सेम लाइन में आपका डेटा आ जाएगा। देख, like this. अगर आपको स्पेस देना है, यू कैन ऑल्सो गिव स्पेस लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे एंड ना देता, तो उस केस में क्या होता है कि सारे जो है ना नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहे थे। मुझे नेक्स्ट लाइन में स्टार नहीं चाहिए थे, मुझे सेम लाइन में चाहिए थे। तो फॉर दैट आई हैव टेकन एंड इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, इसलिए मैंने एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग लिया। नेक्स्ट डाउट। If any doubt is there, you can, sir, how the last print is creating into new line. See here, जब आप खाली print लिखते हो, when you are writing something like this, basically this means that move into next. इसका मतलब ही होता है next line में move करना। मैं एक example दिखाऊं। Let me show you one example. I have written hi how are. मैंने एक लिखा hi how are. उसके बाद मैंने एक print statement डाला, that is nothing, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। After this I am writing something like 5. अब इस केस में क्या होगा समझिए। In this case, if I am going to run it, जब मैं रन करूंगा इसको, in that case you will see one empty line will come. आपको empty line दिख रही है? ये इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव कर। जब आप नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हो तब आपको ये empty लाइन दिखेगी। नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में नहीं मूव करना है, in that case you can write like this. So in this case आप देखोगे सेम लाइन भी। बट यहाँ पे मैंने जो खाली एम्प्टी डाला है ना, इस वजह से ये नेक्स्ट लाइन में मूव। अगर मैं खाली एम्प्टी हटा दूंगा तो सारी चीजें आपकी सेम लाइन में आएंगी। एंड ये कर, और जब मैं प्रिंट लिखूंगा, इफ आई एम राइटिंग प्रिंट हियर, खाली प्रिंट, सो दैट मींस मूव इनटू नेक्स्ट। क्लियर हुआ सबको ये एग्जांपल? ठीक है, when we are going to use this nested loops, basically nested loops are used in iterating a nested list, comma tuple, etc. जब आपके पास नेस्टेड कंटेंट होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई एम हैविंग वन लिस्ट समथिंग लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7, 8, 9। अच्छा, अब इस केस में अगर मैं फॉर लूप चलाता हूं, फॉर आई इन लिस्ट, क्या होगा देखो। सी, वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। मुझे एक एक एलिमेंट सेपरेटली चाहिए। I want each and every element separately. What I need to do? मैं अगेन एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर j in I। किसके ऊपर ये मैं चला रहा हूं? ये मैं चला रहा हूं इसके ऊपर। आई वैल्यू क्या है? आई वैल्यू है ये। अब मैं इसके ऊपर इनर लूप चला रहा हूं। जब मैं इसके ऊपर इनर लूप चला रहा हूं, तो आप देखोगे फर्स्ट केस में j की वैल्यू क्या है? 1। नेक्स्ट केस में j की वैल्यू क्या है? 2। नेक्स्ट केस में j की वैल्यू क्या है? तो अगर आपको नेस्टेड कंटेंट को आइटरेट करना है, यू विल डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटेक्स। नेस्टेड फॉर लूप बेसिकली इसलिए यूज होता है, देखो सारे एलिमेंट्स आप इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करो। बट इफ यू आर यूजिंग सिंगल लूप,
सिंगल लूप में आपको सिर्फ ये कंटेंट दिखेगा, ये कंटेंट दिखेगा, ये कंटेंट। आफ्टर दिस यू नीड टू आइट्रेट ओवर दीज आइट्रेबल्स एज वेल, आपको इसके ऊपर भी आइट्रेट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट आई हैव टेकन वन मोर, दैट इज योर जेन। ओके, सो इफ आई एम प्रिंटिंग माय आई वैल्यू, देखो अगर मैं आई को प्रिंट करूंगा आप देखोगे टपल्स आएंगे, आप सी योर टपल्स आर, अब मुझे इन टपल्स पे भी आइट्रेट करना। सो फॉर दैट आई हैव टेकन वन मोर लूप दैट इज जे, और मैं किसके ऊपर जा रहा हूं, आई के ऊपर। आई कुछ नहीं है, आई है हमारा टपल। सो टपल के ऊपर मैं आइट्रेट करूं। So J is nothing but a iterator which is going to iterate over these tuples. इसलिए यूज किया जाता है nested को बहुत। That is a reason. If you want to iterate anything like this type of content is there, and you want to iterate in this type of content, you need to use nested loops, ASCII loops. ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? Is this point is clear? जिसको नहीं क्लियर हुआ प्लीज लेट मी नो। जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है प्लीज लेट। एवरीबडी इज कंफर्टेबल? ठीक है, चलो आपके डाउट सब ले लेते हैं। ये कंसीडर करा, हाँ देखो क्या हो रहा है यहाँ। आई जो है ना, आई होता है एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट हमारा ये पूरा है, दूसरा एलिमेंट ये पूरा है, तीसरा एलिमेंट ये। अब मुझे ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर भी आइटरेट। तो मैंने क्या किया, आई क्या है, आई है ये एलिमेंट्स, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन एलिमेंट्स पे भी लूप चलाए दे। सो जे इन आई, आई क्या है, आई है ये। तो फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या, जे की वैल्यू क्या होगी, 1, देन 2, देन लाइक दैट इट विल। हाँ प्रांजल, मैंने बोला था ना फॉर लूप ट्रिकी है, इतना आसान नहीं है फॉर। ठीक है, इवन मैंने बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक से बताई है। ठीक है, फॉर लूप थोड़ा सा ट्रिकी है, डे बाय डे थिंग्स आर गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि 90 से 100% प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फॉर। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लूप। अगर आपको प्रूफ चाहिए मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, कितनी प्रैक्टिस, इवन मैं तो बहुत कराता था बट स्टिल वी आर हैविंग लिमिटेशंस। So if I can show you how much questions, like a lot of problems I am trying to solve related to for loop and while loops. Armstrong number, basically it is a for loop problem, so you can skip it as of now. See, while loop problem. This is also while loop problem, and this is for loop, nested for loop. So ये सारी problems हैं जो आप देख रहे हो, ये सब problems. All these are problems. For this factorial problem, for I in range 1,6, how it is working? Like this. So, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिस ही एक ऑप्शन है फॉर लूप को समझने का। मैं चाहे जितना बता दूं, चाहे रटवा दूं, फिर भी फॉर लूप नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। अभी आपके सामने कोई लीड कोड का एक नया क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन आया, मैं लीड कोड आपको खोल के दिखा भी दे। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको वहां पे सॉल्व करना होगा। यू नीड टू यूज फॉर लूप, यू नीड टू यूज व्हाइल लूप। आप रट के ये चीज नहीं कर सकते। You need to practice. That is the only option to understand for. देखो यार, for loop we have used. Okay, enumerate we have not discussed. Even instead of enumerate हम लोग length function भी use कर सकते हैं। ठीक है, so ऐसे आप देखोगे most of the problems are there that you are going to solve with the help of for. बहुत सार, you can say approximately सारी problem आप for loop से solve। ठीक है, 99% problems you are going to use for। अब 90 यहाँ पे भी देखो आप for loop use हुआ है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम में आपका फॉर लूप यूज। तो फॉर लूप अगर समझना है तो प्रैक्टिस ही एक ऑप्शन, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन। आप अगर रट रहे हो या समझने की कोशिश नहीं करोगे, देन यू विल नेवर बी अंडरस्टैंड दिस फॉर। और जो ये कह रहे हैं कि फॉर लूप बहुत कठिन है, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट और गूगल, यू विल नॉट गेट दिस थिंग दैट आई हैव टू। रेंज फंक्शन एंड ऑल आपको कभी भी फॉर लूप के साथ नहीं दिखे। इवन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज वी आर लर्निंग दिस, हम लोग लर्न करते हैं, इस वजह से मैंने बताया है। दिखा, डायरेक्टली फॉर लूप आपको दिखा देगा
कि फॉर लूप होता क्या है, एंड डायरेक्टली दे विल यूज समथिंग लाइक, हाँ, see, this is my code. What are the iterables string they have given? Then they have given the range function. What is this range function? आपको ये आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा, अब यहाँ पे रेंज फंक्शन उन्होंने नहीं बताया ये रेंज फंक्शन होता क्या है। इवन दिस रेंज फंक्शन इज अ वेरी बिग थिंग, ये बहुत बड़ी चीज, बहुत छोटी चीज नहीं है, इट इज अ वेरी बिग थिंग। ओके, सो लाइक दैट, सो बहुत सारी चीजें हैं फॉर लूप से। तो ये सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही समझोगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऑप्शन है। अगर आपको फॉर लूप में अच्छा बनना है, देन प्रैक्टिस शीट आई हैव गिवन, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स इजीली यू कैन सॉल्व, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बहुत मल्टीप्लिकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर। सम ऑफ स्क्वायर्स आप बहुत आराम से कर सकते हो इस प्रॉब्लम। दिस वन क्यूब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। सिमिलर टू फैक्टोरियल प्रॉब्लम है ये। फैक्टोरियल में क्या करते थे, प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ क्या करेंगे, सम लेंगे, उसका क्यूब करेंगे या स्क्वायर करेंगे। सिमिलर है, स्लाइड मैनिपुलेशन है, बाकी सब। तो प्रैक्टिस एक ऑप्शन है आपको फॉर लूप समझने का, सिर्फ प्रैक्टिस ही ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस ही ऑप्शन। सर प्री रिकॉर्डेड लेसन में आउटपुट में यूज कराया स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। आर्यनिक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नाम की चीज होती है, दैट इज यूज्ड एज अ प्लेस। मैं बता देता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यूज पास करनी, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हाई हाई माई नेम इज माई नेम इज, और यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू पास करना, और वेरिएबल की वैल्यू जो है मैं बताता हूँ क्या है जो आप बता रहे हो। वेरिएबल की वैल्यू जो है समथिंग लाइक अंश। अब अगर ये वैल्यू जो है, ये वेरिएबल की जो वैल्यू है, मुझे इस स्ट्रिंग में पास करनी, कि ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। अब ये मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नाम की चीज, वो क्या कहती है, आपको अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल इम्बेड करना, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल इम्बेड करना है तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कॉन्सेप्ट एफ। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट पुट योर वेरिएबल नेम इन कोटेशन, दैट्स नाउ। ये क्या करेगा, जो आपका वेरिएबल का नाम है, वो वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे दे दे। तो अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल इंसर्ट करना है, आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। क्या करना होता है, आपको लिखना पड़ेगा एफ पहले, एफ इज नोन एज फॉर्मेटिंग, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज कर्ली ब्रेसेस, और उस कर्ली ब्रेसेस में आप अपना जो है वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल का, आप वो वेरिएबल का नाम। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू इम्बेड करनी है, you can do that with the help of string formatting. So f is nothing but a string formatting concept, and this curly braces, inside this curly braces you need to give your variable. So variable name is name. So name I am passing. So ये curly braces क्या करता है, जो भी variable का नाम होगा वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट और इंजेक्ट कर देगा। इट इज जस्ट इंजेक्टिंग द वैल्यू इन योर स्ट्रिंग। सो दैट इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो यही चीज आपका डाउट है। So this curly braces is nothing but a placeholder in your string. Next doubt. हाँ, explain about eval function. Basically eval function क्या करता है, आपका एक string लेगा एज एन इनपुट। eval function हमेशा एक string लेता है, तो जो भी string आप दोगे वो string ले लेगा। So let me take that string. Suppose that 1 plus 2, ये एक string मैंने पास। eval क्या करेगा, इस string में जो भी कंटेंट होगा उसको सॉल्व कर देगा। तो सॉल्व करेगा 1 plus 2, व्हाट इज द आंसर 3। तो 3 हमारा रिजल्ट होगा, तो इवैल उसी को रिटर्न। तो जो भी कंटेंट आप देते हो इवैल के अंदर, ये चेक करेगा क्या ये वैलिड है कि नहीं। अगर ये वैलिड होगा तो इवैल्यूएट उसको सॉल्व करेगा तुम्हारे लिए, और उसका रिजल्ट आपको दैट इज योर इवैल। फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग इवैल ऑफ समथिंग लाइक 1 2 3, मैंने ऐसे लिखा, एंड इफ आई एम गोइंग टू रन दिस, अब इवैल क्या करेगा, इवैल देखेगा इज इट वैलिड और नॉट, क्या ये वैलिड एक्सप्रेशन है कि नहीं है। यस इट इज वैलिड, इज अ लिस्ट इन पाइथन। सो पाइथन की लिस्ट है, तो क्या करेगा इवैल, इसको कन्वर्ट कर देगा उस डेटा टाइप में, इसको इवैल्यूएट करके कन्वर्ट कर देगा उस पर्टिकुलर डेटा टाइप जो कि है हमारा लिस्ट। यही इवैल का प्लान, बस इतना ही है।
अब जिसको भी डाउट है एक एक करके अपने अपने डाउट पूछ लो। आई विल शेयर द नोट्स। और एक और चीज है, फॉर लूप सिर्फ प्रैक्टिस से समझोगे। मैं चाहे जितने क्वेश्चंस करा दूं, चाहे जितना रटवा दूं, इट विल नॉट। सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऑप्शन है जिससे आप फॉर लूप प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस ही ऑप्शन, उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है फॉर लूप समझने का। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, जितना भी होता है फॉर लूप में। आई हैव एक्सप्लेन दैट। 2 to 3 प्रॉब्लम्स आई हैव टेकन, आई हैव एक्सप्लेन यू दैट। सो प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, ट्राई टू सॉल्व दैट। ठीक है, ये सबके लिए है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व। क्योंकि फॉर लूप और व्हाइल लूप ऐसी चीज है कि मैं रटवा नहीं सकता, वो रट सकते ही नहीं। क्योंकि whenever problem is coming, your for loop and while loop is going to change accordingly. आपका for loop और while loop उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब जिसको डाउट है वो डाउट पूछ सकता है। एंड वन मोर थिंग, टीम विल शेयर द फीडबैक फॉर्म। प्लीज शेयर योर फीडबैक, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली मैं नेक्स्ट मॉड्यूल डिसाइड। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रही होगी बच्चों को, आई विल जस्ट थिंक अबाउट नेक्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो आप लोग फीडबैक देना अपना, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आई विल थिंक अबाउट दी। सर नेक्स्ट क्लास ऑफ व्हाइल लूप स्टार्ट होगा। यस आर्यन, बेसिक्स ऑफ व्हाइल लूप मैं कराऊंगा इन नेक्स्ट क्लास, एंड ट्रांसफर स्टेटमेंट। दीस टू थिंग्स आई विल डिस्कस। और एक सेशन मैं लूंगा, इसमें डाउट सॉल्व वो कराऊंगा मैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉर लूप एंड व्हाइल। ओके आर्यन, in next class I will cover while loop and transfer statement, and then I will take few problems. Okay, or I will take one separate session, in that I will discuss problems related to for loop and while loop. ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, for loop क्या होता है, while loop क्या होता है, कैसे for loop क्या होता है, कैसे यूज। Okay, now you can practice it. If still it is not clear, no need to worry, मैं फिर से उस चीज को बताऊंगा। I will solve few problems for you in some of these sessions. जो भी सेशन अगला होगा मैं ट्राई करूंगा उसमें सॉल्व करने की। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, जिसको डाउट नहीं है दे कैन लीव द सेशन, दैट्स इट। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। या जिसको डाउट है वो अपना डाउट पूछ सकता है। इनपुट में वैल कैसे करें, आप सिर्फ इवैल लिख दोगे बस, और इनपुट फंक्शन पास कर दो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होता है ना, वो इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में रहता है। तो अगर आप इवैल पास करोगे तो क्या करेगा, जो भी यूजर इनपुट देगा ना, वो अगर वैलिड एक्सप्रेशन होगा तो वो बाय डिफॉल्ट इवैल जो है उसको कन्वर्ट कर देगा उस पर्टिकुलर डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट दिया, in input function you have given list, what eval will do, eval will check it is a valid expression or not. if it is a valid expression, अगर valid expression होगा तो उसको उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में वो कन्वर्ट कर देगा। तो अगर लिस्ट आप इनपुट दोगे तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट इज अ डेटा टाइप ऑफ पाइथन, सो eval will convert that in the form of list. ऐसे आप यूज कर सकते, डायरेक्टली यू कैन राइट eval within bracket input, that's it. eval within bracket input, that's it. You can take input. सर बेसिक्स ऑफ फंक्शन समझ में आ जाता है, बट रियल टाइम कोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं वो प्रोजेक्ट में आपको समझ में आएगा। ठीक है, वो ऐसे नहीं आता है। जब आप प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हो ना, तब रियल टाइम में आपको समझ में आता है। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो बेसिक्स, अभी रियल टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इन सब चीज। जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, तब हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो अभी आपको क्लियर नहीं होगा, किसी को नहीं क्लियर कि यहाँ पे मैं फॉर लूप कर रहा हूँ तो उसका यूज क्या है। जब आप रियल टाइम कोई उस टाइप का इश्यू देखोगे तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप उसको यूज करो, तो वो आपका अभी नहीं समझ आएगा। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब आपको वो चीज क्लियर होगी, यहाँ पे फॉर लूप हम यूज कर सकते हैं या यहाँ पे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तभी समझ में आएगा जब प्रोजेक्ट्स हम लोग करें। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे हमको क्या यूज करना। Yeah, so team will share the feedback form. You can share your feedback. I don't think any question is there. Okay. चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि एवरीबॉडी, बाय बाय। या बाय बाय।